भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार सभी को, आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉल्स मैसेज आए जा रहे हैं कि वो कहीं तो है रास्ते में, कहीं गूगल मैप कहीं और लेके जा रहा है, तो काफी बार हो रही है। Yes, we will start. Already delayed, so my apologies for the delay. But I hope the experience is. But I see a lot of people are already dressed up. Okay, so we will start with today's program, and so I'll just give you brief first on what's the purpose, why we are doing it, and then I'll just brief you on agenda, what all we are going to do today. So 11th September is the date. Whenever when I ask people, 99.9% of the people, when I asked what happened on 11th September, the default response was, हाँ terrorist attack हुआ था, 9/11 WTC. Almost everybody. And yeah, of course, that was bad. Those are terrible incidents. But and then when I said, yeah, there is something that happened 11 September 1893, Swami Vivekanand speech. Chicago, Chicago, yes, yes, yes. That's how. And that has been the code that how can we bring this date or this date's significance back in people's conscious. And journey here started with the inspiration and the idea was from Swami Vivekananda. I can say that he gave a simple task that do something that people at least start remembering this date and associating it with Swami Vivekananda in a positive context and not just the terrorist attack. That is where started. Said, okay, what all can be done? What can be done? Then one of the random ideas actually was this that why can't we recreate that experience in a different way? So that is where it came that maybe we can arrange something where people can dress up like Swami Vivekananda and recite the same speech. So that's where journey for today's event started. And then when I started looking at, okay, honestly, initially I thought, yeah, fine, we can buy the dress and we can do it. Then I found the dresses are simply not available. And then I inquired further, got to know that yeah, we have to design something custom and get it built. And for that, again, nobody was ready to really do it like a small quantity, 50, 100. 500 was the option wherein yeah, it was workable. I said, okay, fine, let's do it. If it's 500, it's 500. We'll do it. And we checked online on whether such a record has ever been attempted. Lucky for us, yeah, no. So I can say yeah, not even 50 people together have dressed up as Swamiji and recited the speech. So yeah, 500 is still a big number. But we found that yeah, if this is something which we can aim for, then that will be great. So with that, we started getting shape, and in parallel, it was like how to do it, under what banner we do it, and then it was like one thing which has been in mind already was if you have to do it, see, it's not going to be a one-time event. It is something which should kickstart something, start a movement,
and that means it needs a banner under which we'll do more activities further. And when we leave today, it's not going to be the end, but it's going to be the beginning. That is where again the idea for Jamban Foundation came in. That again it's a very simple idea. Those who would know from Ramayana, the way Jambanji awakened Hanuman, right? That is where it was. That if we can really we can play the same role, and we can awaken the Hanuman within all of us. And that has been the idea, that if we can achieve that, well, I truly believe that yes, every one of us, each one of us, definitely has a Hanuman within. We just need the nudge, just need the push, just needs to be awakened. So that was the idea of Gyan Jaman Foundation. Uh, I'll I want to start with just a short paragraph. This is from Swami Vivekananda's address at Lahore. This was made in 1897. This again, I can't claim to be there, know it all. This actually was given again by Swami Vivekananda. He said, "This is something which we need to highlight." So I'll just read it out. So this is what Swami Vivekananda said in 1897 in then Lahore, which of course was part of Akhand Bharat at that time. It was Pakistan. We are Hindus. I do not use the word Hindu in any bad sense at all, nor do I agree with those that think there is any bad meaning in it. In old times, it simply meant people who lived on the other side of the Indus. Today, a good many among those who hate us may have put a bad interpretation upon it, but names are nothing. Upon us depends whether the name Hindu will stand for everything that is glorious, everything that is spiritual, or whether it will remain a name of opprobrium, one designating the downtrodden, the worthless, the heathen. If at present the word Hindu means anything bad, never mind. By our action, let us be ready to show that this is the highest word that any language can invent. It has been one of the principles of my life not to be ashamed of my own ancestors. I am one of the proudest men ever born. But let me tell you frankly, it's not for myself, but on account of my ancestry. So this is what he said, and this is the background of the statement that later on came. गर्व से कहो हम हिंदू हैं. Be proud to be Hindu. So this is the background for it. Um, with that, we'll move. So I'll just tell you what all we are going to do. So we're going to have Deep Prajulan, um, uh, and we'll garland Swami Vivekanand ji and Bharat Mata portrait, followed by we are going to have short notes from our distinguished guest and guest of honor. Will be followed by a keynote address by Swami Vivekananda. Unfortunately, he is not here. He had to stay back in Delhi due to certain program of Vishwa Hindu Parishad. Just to let you know, he didn't want to miss it, and he actually recorded the keynote last night at 11:30 p.m. Yeah, he said, no, this is something good which is happening, so definitely my word should go out. We'll follow it by panel discussion. We have the panelists here already. On the panel side again, yes, last night again 10:30 p.m. I got a call from Kapil Mishra ji. Unfortunately, he also was put on election duty in Haryana, so he had to excuse himself. But yes, we have rest of the panelists with us here, present already. That will be followed by the blessings note from Swami Govind Devgiri ji.
who, by the way, has been working on the exact topic. What did Swami Vivekanand say about Shivaji Maharaj? And that is one of the topics in the panel discussion as well. And post that, that's when we'll do the world record attempt. And this is why, like, all of you and we are getting dressed up this is because that's the component that maximum number of people that are dressed up as Swami Vivekanandji and reciting that speech. You will be getting the copy of the speeches as well in your hand by that time, and then we'll have the thank you note and closing remark. Okay, great. In all of it, I forgot to introduce myself. I think many of you might know me already, but still, I am Gaurav Tripathi, and yeah, I'm a co-founder and CTO at InnoPlexus. And this is something which has been at the core. Even Gunjan and I, when we founded this company, uh, we had the uh, we had the impact of Swami Vivekanandji's teachings, and I can say that how I got to it probably was in somewhere in 2004 or 3. I don't remember exactly, but IIT बॉम्बे के सामने मेन गेट के सामने एक रद्दी वाला है कबाड़ी वाला and I uh, uh, I used to often go there to buy books, and that is where I found one book which was Swami Vivekananda's Call to the Nation. It's a compilation of some of his best quotes, and that one book literally it had a huge impact when I read it, and still I don't remember how many times have I read it, but every time I read anything from it, I have goosebumps. So that's where, and at Innoplexus as well, we have many times we have distributed books of Swamiji. So it's been there. Um, Team, are we ready for the Deep Prajwalan? Rohit, or somebody can give a green signal. Okay. Uh, Now I'll invite our guests and speakers on the stage to we'll do Deep Prajulan, and we'll officially kickstart. Uh, Aditya Pittiji, please, if you can come on the stage. Uh, Gunjan, Gunjan, if you can join. Anand ji, Ashwini ji, Shefali ji.
Thank you. Now I'd like to welcome my batchmate, my friend, my partner in crime, Dr. Gunjan Bhardwaj. He's our distinguished guest for today. Uh, I'll, he'll speak about Swami Vivekananda and how the impact on his life, our lives, has been really. He's He's the founder and CEO of Partex, deep tech platform focused on improving health and longevity. And he was also earlier the CEO of Innoplexis AG, which is a AI leader in life sciences. Studied at IIT Bombay, MIT, and Fordham University. He worked at BCG and EY. He holds 18 plus patents in AI and blockchain. Has mentored various AI think tanks. Is adjunct professor in Germany. Is published widely in a number of journals like Harvard Business Review and MIT Sloan Review. It's been recognized with multiple numerous awards. 40 under 40, Capital Magazine, Germany's Focus Magazine, top 30 most influential people, Europe. Uh, he's a uh, he's a thought leader in technology and business both. And uh, other than knowing each other for almost 3 years now, one thing we share is the deep respect for Swami Vivekanand, and everything that we do has an impact. So, Gunjan, please. Thanks a lot, my partner in crime, my first friend at IIT Bombay. When we joined IIT Bombay, we actually learned to dream. And I've been always reading about Swami Vivekanand. His poster adorned my room growing up, and we were full of confidence and love for our country, and we thought everything is possible. And hence we started a couple of enterprises. We did things related to literature. We started a newspaper in the campus. We started a couple of startups as undergrads. And we always said we have to dream big. And we believed if someone were to ask that we have to send a rocket to the moon or any planet, we can just achieve anything. It was great faith in our ability to work hard, in our ability to learn, inspired by Swamiji. And over the course of time, as I left for Germany after my graduation, I was humbled by an event. And I can tell all of you, and I can share with all of you, even death does not defeat your enthusiasm. It's the sense of hopelessness. One fine day, when my first boss and my mentor and a very dear friend, he called me and he told me that he has been diagnosed with cancer. So the same family that I had been visiting almost every weekend, every word of German that I speak, which some of my friends falsely say I speak good German. Whatever German I have learned, I learned from that friend. And when I saw his family and him facing this disease, the sense of hopelessness and questions on their faces, that's what was the first defeat that we faced in our lives. Me, Gaurav, and some of our team members who have been right from the start helping us build the Partex platform. Even today, when someone is diagnosed with a life-threatening disease, the patients are in a blind flight. You don't know what alternatives you have. Recently, some 6-7 months back, an Indian family in Frankfurt approached us. Mother was facing last stage
of breast cancer, and they asked if there are studies taking place with innovative drugs in and around Frankfurt. We very quickly found out that there were actually 3 studies where his mother could have participated and had a shot at life. Unfortunately, it was too late. So we started with the idea that we'll bridge this information asymmetry for patients. Some of you would be surprised that there are 18,000 drugs in clinical development today. 18,000. And I'm sure few of you would be able to guess how many drugs US FDA approved last year. 55. We are sending missions to Mars. We are driving EVs. We are talking about setting up colonies elsewhere, sending humans. But we are not able to get drugs out for diseases that are life-threatening. And we are making all attempts using deep tech, using artificial intelligence with a fantastic team to create a true impact there. So over the course of past couple of years, we have licensed 3 cancer drugs that we are developing. We have been partnering with a number of big pharmas and biotechs and have a very unique and novel approach to how we leverage patient data to train artificial intelligence models. Most of the players in this space, they would aggregate patient data, anonymize, and keep the value in their own pockets. And it's true in other industries as well. When you use ChatGPT, upload your data, when you search something on Google, you very well know you are training models for someone else. And that's okay. Many of you would be fine with that. But the value that your data contribution creates, your partake is 0. Not just that, you don't just know where your data is going and how it's being utilized. We have changed this with a platform that we call Amrit, wherein using blockchain and artificial intelligence, we are giving back the lion's share of the value of that data back to the patients, back to the hospitals, back to the governments that are funding healthcare systems at unsustainable levels. Today, many countries in Europe have aging populations. The exchequer cannot cross-subsidize because the people who are paying in the taxes are getting less and less every year. And countries such as ours have an affordability challenge. We believe by assigning value to this data and letting the system, the healthcare system, partake a share in the value in this data, a lion's share of the value in this data, we can substantially alleviate the cost problem for various healthcare systems. What energizes us to work day and night? We believe, and that's what Swamiji said, we are instruments of the divine. I read this quote that has stuck with me. Even at the gate of death, in the greatest danger, in the thick of the battlefield, at the bottom of the ocean, on the tops of the highest mountains, in the thickest of forest, tell yourself, I am he, I am he. Day and night say, I am he. It is the greatest strength. And I always recite a poem that I wrote with the same idea, and I would take your permission to do the same. The poem is titled, मैं पक्ष हूं खड़ा समक्ष. मैं पक्ष हूं खड़ा समक्ष, भावों का वंदन करता हूं. अनंत ताप के अंतर मन से गदगद अभिवादन करता हूं. जिह्वा से गरल किंचित अहो, मैं शिव सा विस्मित कटु कहो. उन वृक्षों सा वन में प्रबल, भूसा जो सहती सब सबल. देख रहे जो तुम प्रतिमा, वो अपभ्रंश की काया है.
मैं निराकार शिव हूं तांडव, ओमकार की छाया है। मैं एकलव्य, मैं अर्जुन, मैं ही अश्वत्थामा हूं। मैं हूं सच्चित आनंद, मैं ही मीरा राधा हूं। सब गीत मेरे, मेरा ही सुर, मेरी ही सारी काया है। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मुझसे ही सारी माया है। मैं मानव बस रूप मेरा, शिव हूं जीवन जीने आया हूं। रोने पाने खोने सोने, खिल खिल कर हंसने आया हूं। मैं पक्ष हूं खड़ा समक्ष, भावों का वंदन करता हूं। अनंत आपके अंतर मन से गदगद अभिवादन करता हूं। थैंक्स अ लॉट। Thank you, Gunjan. As always, that was great. जो हिंदी में कविता उन्होंने बोली, तो that's a, was just telling Rohit, that's a proof that we used to run आईआईटी बॉम्बे का पहला हिंदी न्यूज़पेपर गुंजन और मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी थोड़ा देख के लगता है भी पहले हम इतनी अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, I'll request our guest of honor, Aditya Pitti to be here, and I'll just so there is very interesting connection uh, with Aditya ji and the date, or rather the year. So 1893, I mean, today's event is about that speech, but 1893 is very the key year for him, his family, and for Pune. I don't know how many people know, but um, in 1893, Pune's first industry was set up by Raja Mukundlal Pitti, and it was, of course, the Raja Bahadur Motilal Pune Mills that was started 1893. So that year definitely connects, and Aditya Pitti ji is very much the sign of that family. He's an accomplished entrepreneur, angel investor, owner of Pitti Enterprises, diversified conglomerate. With degrees in material science from University of Michigan, MBA from MIT, is a strong academic background. Aditji is actively involved in nation building through his leadership roles in BJP and a mentor for various startup incubators. He's also a board member for MIT South Asia Alumni. He has recently co-authored the book Modi's Northeast Story, highlighting the transformation of the region under Prime Minister Narendra Modi's leadership. Very much inspired by the Honorable Prime Minister Modi ji to commit to nation building, he joined the Bharatiya Janata Party and is presently the convener Western Maharashtra of the BJP intellectual cell. And he's also the past president of the Entrepreneurs Organization. So here with us, Aditya ji, please. Yeah, I read it. My friend should I read it now? Thanks. Thank you, Gaurav, for that wonderful introduction. Namaskar, everyone. It's really a distinct honor to speak to all of you today on the anniversary of Swami Vivekananda's historic speech in 1893. I have been asked by Gaurav to connect Swamiji's teachings to the mission of Viksit Bharat. I have been supporting a lot of activities of Viksit Bharat. So, how does these ideas of Swamiji
which he spoke more than 100 years ago, connect presently to the mission of Viksit Bharat. So Swamiji's teachings transcend time and resonate deeply with India's mission of creating Viksit Bharat. In fact, Gurudev Rabindranath Tagore ji said, if you want to know India, study Vivekanand. In him, there is everything positive and nothing negative. Viksit Bharat, as you all will know, is an ambitious national vision to transform India into a developed nation by 2047. This vision encompasses various aspects of national development, including economic growth, social welfare, educational empowerment, technological advancements, and sustainable living. Viksit Bharat is a national endeavor that calls upon every citizen to contribute towards the nation's development. Swamiji's teachings are incredibly relevant to this vision as they promote the holistic development of individuals and societies. One of the most profound lessons of Swamiji's teachings is the call for self reliance. He believed that a nation's strength comes from its people, particularly the ability to stand on their own feet, both economically and spiritually. Hence, he advised them, quoting him, to arise, awake, and stop not till the goal is reached, urging all Bharatiyas to strive for self sufficiency, resilience, and excellence. This philosophy is reflected in the Atmanirbhar Bharat initiative. His teachings remind us that self reliance is not just about economic independence, but also about building inner strength, confidence, and character, qualities that will drive India's progress. For India's mission of Viksit Bharat to be truly successful, it must balance material progress with ethical and spiritual growth. As the nation modernizes, Swamiji's spiritual teachings provide the moral compass needed to ensure that progress benefits humanity as a whole. Education was also central to Swamiji's teachings, and he viewed it as the key to nation development. He believed that true education goes beyond mere bookish knowledge, and it is about, again quoting him, manifestation of the perfection already in man. This emphasis on education resonates strongly with Viksit Bharat's focus on creating an inclusive, knowledge driven society. The government's efforts to increase access to education through initiatives like the new education policy aim to make India a global knowledge hub, promoting critical thinking, creativity, and innovation. Swamiji said, "My faith is in younger generations, the modern generation. They will work out the whole problem like lions." Swamiji's speech at the World's Parliament of Religions in 1893 is also profoundly relevant to the vision of Viksit Bharat. His message of tolerance, unity, and universal acceptance serves as a guiding philosophy and also offers valuable lessons for the business world. Swamiji's call for empathy and compassion is reflected in the modern concept of corporate social responsibility or CSR. The focus on inclusive growth and lifting the underprivileged sections of society aligns with the broader visions of Viksit Bharat. Swamiji's belief, quoting him, all paths lead to the same goal, encourages businesses and individuals to align their strategies with national priorities, contributing to India's growth in a way that benefits all citizens. I would also like to recount an interesting anecdote. The story of Swamiji's and Jamshedji Tata's meeting in May 1893. So just to recall, the famous speech was in September 1893. In May 1893, these two great men met aboard the SS Empress of India while they were traveling to Chicago. Swamiji was traveling to participate in the World's Parliament of Religions, while Jamshedji was visiting for an industrial expo. One of the key points of their conversation was Jamshedji's dream of building India's scientific and industrial base. 5 years after this meeting, Jamshedji wrote a letter to Swamiji and sought his guidance in establishing a research institute in India that would be inspired by the ascetic spirit of India and devoted to scientific research. This vision eventually materialized with the establishment of the Tata Institute of Science, which later became the Indian Institute of Science in Bangalore in 1911.
In today's context, Indian businesses are called upon to innovate and grow while also contributing to the larger societal good, much like the mission that Swamiji and Jamshedji envisioned over a century ago. To conclude, Swamiji's timeless message of tolerance, unity, and compassion, and his emphasis on education, self reliance, unity, and spirituality serve as a roadmap for Viksit Bharat. His philosophy encourages businesses to foster inclusivity, embrace innovation, and contribute to the greater good of society. As Honorable Prime Minister Modi ji said, Swami Vivekanand had said in 1897 that we must dedicate the next 50 years solely for the nation. Exactly 50 years after that call, Bharat gained independence in 1947. Today, we have the same golden opportunity. Let's dedicate the next 25 years solely for the nation. To end with a quote of Swamiji, every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, and a destiny to reach. Let's all work together for Viksit Bharat. Thank you. Thank you, Aditji, for really giving the connect to Viksit Bharat. And that is what I think all of us can find, that Swamiji's teachings, I find it probably it's much more relevant today than it ever was. And so thank you, Aditji, for bringing those points here. Moving further, we have the main keynote address by Swami Vivekananda. I'll just give a short introduction of Swamiji, although not that he needs it really, but I'll still attempt to do the same. Audio team, you'll need to play Swami Vivekananda's address here, yeah? So live stream maybe, and here, okay, so just Swami Vivekananda, again one of those few monks that you will find that he studied at IIT Kharagpur. He did his bachelor's in engineering from IIT Kharagpur, and then he took sannyas, and he has traveled widely. I think probably there is no country on earth where at least one Hindu lives where Swamiji has not been. At least I know that much. He is founder and global chairman of World Hindu Foundation and chief organizer and founder of World Hindu Congress and World Hindu Economic Forum as well. He's a towering practitioner, intellectual of Hindu Dharma, and a distinguished scholar on Hinduism and global Hindu movement. He's an intellectual mentor and strategic guide for hundreds of distinguished Hindu activists and organizations operating multitude of Hindu empowerment and awareness projects with worldwide scope, comprising Asia, Pacific, Europe, South Asia, Africa, America, practically the entire world. He is currently the Joint General Secretary of Vishwa Hindu Parishad, Bharat. Then this, I'll say that Swamiji's vision has been something which initially it's difficult to grasp. Really, you may see that you may say that what is he talking about? Back in what he used to say back in 2012, I think a lot of people are beginning to understand now the dangers that he had already highlighted, the challenges that we are going to face as a civilization, as a nation. So Swami Vivekananda, that's where he himself has set few records, wherein that includes, if I'm not wrong, remembering and reciting 10,000 verses in like a month's time. Yeah, so extremely learned. Team, ready? We can play the video.
You can just give the visual from the restream side itself. There, the video is there. So you can give the visual from display from restream. चामन फाउंडेशन पुणे ने स्वामी विवेकानंद का जो प्रसिद्ध शिकागो लेक्चर है पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन के समय का I didn't उसका mention it actually. I 131वां should have. So वर्ष this है। ऐसे समय में program is being live streamed हजारों की संख्या में on लोग उस Amar प्रवचन को Ujala's रिसाइट करने platform वाले as well. In addition to इसका मैं आपको बता रहा हूँ इसका कंटेक्स्ट क्या है सबसे that's महत्वपूर्ण why कि uh, भारत feed एज ए has gone कंट्री to एज ए नेशन एज ए live सिविलाइजेशन streaming as well. हिंदू हम लोग ऑलमोस्ट We'll share the same 2300 ईयर से स्वामी विवेकानंद के समय कह सकते 2200 ईयर से फाइटिंग टू लिव दिस डिग्री रेस्पेक्ट था ना, यानी हमारे पूर्वज पहले अलेक्जेंडर से लड़े है ना, फिर शिथियन पार्थियन से लड़े, फिर शिकागो लेक्चर है पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजन के समय का उसका 131वां वर्ष है। ऐसे समय में हजारों की संख्या में लोग उस प्रवचन को रिसाइट करने वाले हैं। इसका मैं आपको बता रहा हूँ इसका कंटेक्स्ट क्या है सबसे महत्वपूर्ण कि भारत एज ए कंट्री एज ए नेशन एज ए सिविलाइजेशन हिंदू हम लोग ऑलमोस्ट 2300 ईयर से स्वामी विवेकानंद के समय कह सकते 2200 ईयर से फाइटिंग टू लिव दिस डिग्री रेस्पेक्ट था ना, यानी हमारे पूर्वज पहले अलेक्जेंडर से लड़े है ना, फिर शिथियन पार्थियन से लड़े, फिर कुषाण सकहुन लगभग 900 साल उनसे लड़े है ना। उसके लड़ने के बाद हमारे पास अभी निपटे थे कि अरब आ गए, तुर्क आ गए, फिर मंगोल आ गए और बाकी सभी लोग ईरानियन अफगानी सब लोग आए, लगभग उनसे भी हमारे पूर्वज लगभग 1200-1300 साल लड़े है ना। स्वामी विवेकानंद के समय तो लगभग हम 2200 साल हम लोग लड़ चुके थे ना, स्ट्रगल कर रहे थे। इन सारा चीजों के बीच में अभी मुसलमानों से लड़ाई निपटा ही नहीं था कि फिर आ गए पुर्तगीज आ गए, डच आ गए, फ्रेंच आ गए, ब्रिटिश आ गए ना, और हम कॉलोनाइज थे। इतना बड़ा सिविलाइजेशन का डाउनफॉल था, डाउनफॉल इन द सेंस कि हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारा अपना किंगडम नहीं था, सब ब्रिटिश कॉलोनी बन गए थे, हमारे धर्म संस्कृति परंपरा को डीमिंग किया जा रहा था। ऐसे समय में गुलाम देश का, गरीब देश का, सब्जुगेटेड देश का एक साधु, जो अमेरिका उस समय का सबसे बड़ा देश था, अमीर देशों में कहा जाता था, पहली बार वहां कोलंबस के 400 वर्ष के उपलक्ष्य में कोलंबियन वर्ल्ड एक्सपो हो रहा था। उस कोलंबियन वर्ल्ड एक्सपो के तत्वावधान में वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन का आयोजन हुआ था, जहां सभी देशों से सभी प्रमुख धर्म, रिलीजन, मजहब के लोग आए थे। सबका अलग अलग भाषण हुआ, सबने अपनी अपनी श्रेष्ठता की बात की। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि मुझे कई बार कहा मिस्टर स्वामी विवेकानंद टू स्पीक, मैं कहता बाद में मैं सोचता था, स्वामी विवेकानंद का शब्द है कि अरे सब लोगों ने तो तैयारी करके आए भाषण देने के लिए, मैं तो तैयारी करके लाया नहीं हूं, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन अंत में तो मुझे बोलना ही पड़ा और सरस्वती को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके मैंने भाषण दिया। तो आप सब जानते हैं उनका पहला शब्द था सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जो कि जनरल कन्वेंशन क्या था, लेडीज एंड जेंटलमैन, उसको छोड़ करके स्वामी जी ने क्या किया, सिस्टर ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहते शब्द से ही जो है ना, हॉल जो है ना 8000 लोग ताली से गड़गड़ाते हुए 2-3 मिनट तक कहते रहे। स्वामी जी का शब्द है कान डिफनिंग साइलेंस की तरह से हो गया। और उसके बाद तो स्वामी जी ने भाषण दिया और स्वामी जी ने जहां सब लोग अपनी अपनी श्रेष्ठता की बात कर रहे थे, वहां पर स्वामी जी ने कहा, वो बहुत फेमस अस्सी में हमें स्रोत है कि जैसे पर्वत से सभी तरह की नदियां निकल करके समुद्र की ओर जाती हैं, एक ही रास्ते में जाती हैं, सभी हम सब लोगों को वहीं पर जाना है ना। तो स्वामी जी का मैसेज तो इतना वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में रेजोनेट हुआ कि उसके तो वो विजेता हो गए। तो आप सोच सकते जो समाज, जो देश, जो धर्म संस्कृति समाज
हजारों वर्षों से स्ट्रगल कर रहा हो टू लिव द डिग्निटी रिस्पेक्ट, और गुलाम हो, उसका एक साधु, भिखारी साधु इतने बड़े मंच पर जाके उसके धर्म संस्कृति का परचम लहराया हो, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक था। पूरे हिंदू समाज में जो ना उष्ण रक्त का संचार करने, गौरव संचार करने वाला था। और इस चीज को लेकर के जो जामन फाउंडेशन आज के नौजवानों में और आज की पीढ़ी में उस लेक्चर को, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, मुश्किल से वो 2 मिनट का एक्चुअल लेक्चर जो है ना, वेलकम स्पीच जो है, रेस्पॉन्स टू वेलकम स्पीच स्वामी जी का, लगभग 2 मिनट का भी नहीं है, लेकिन वो पावरफुल लेक्चर है ना, उसको लोग पढ़ेंगे तो प्रेरणा लेंगे, और ये जितना अधिक से अधिक संख्या में पढ़ेंगे, मैं तो कहता हूँ अधिक से अधिक नौजवानों को, स्वामी विवेकानंद को तो कुछ लेटर कंपलसरी करना चाहिए पूरे भारत में। तो स्वामी विवेकानंद का लेक्चर तो जिसको कहते हैं अग्नि मंत्र की तरह से है, नौजवानों को हर समय प्रेरित करने वाले। और भारत के निर्माण के लिए, अब जो कहते हैं न्यू भारत, नया भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के लेक्चर प्रेरणास्पद है। यह बहुत आवश्यक, और इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यह है कि गुलाम देश का, सब्जुगेटेड देश का साधु इतने बड़े मंच पर उस देश की श्रेष्ठता स्थापित करता है जिसके बारे में कहा जाता है तुम्हारा धर्म तो प्रिमिटिव है, बैकवर्ड हो, पत्थर की पूजा करते हो, सुपरस्टिशियस लोग हो, ऐसे जिस समाज की ब्रांडिंग होगी वेस्ट में, वो अपनी जात में श्रेष्ठता स्थापित कर। यही स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर का एक ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है। और बाद में तो उनका लेक्चर ऑन हिंदुइज्म वाला जो एशियन हिंदुइज्म लेक्चर है बहुत फेमस हुआ। और अब तो फिर बाद में तो ऐसा हुआ कि सब लोग हर लेक्चर में स्वामी जी को सुनना चाहते थे, पार्लियामेंट बोली, और सब लोगों भीड़ को शांत करने के लिए बोला जाता था स्वामी विवेकानंद विल स्पीक इन द लास्ट, ऐसा लोगों का माहौल था। तो ये ऐसा है, और जामन फाउंडेशन ये अच्छा काम कर रहा है, मेरी इसकी शुभकामनाएं है। मैं स्वयं नहीं आ सका अपने कुछ कारणों से, क्योंकि संगठन की अचानक व्यवस्थाएं बहुत हो जाती हैं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं है गौरव और उनकी टीम को, गुंजन भारद्वाज उनकी टीम को, और जामन फाउंडेशन सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में लगे हुए हैं। हमें यही चाहिए, स्वामी जी का मैसेज सब जगह फैलाना चाहिए। स्वामी जी क्या है, स्वामी जी के वचन जो है अग्नि मंत्र की तरह से है ना, फायर वर्ड की तरह से हमें इंस्पायर करता है। और स्वामी जी हर समय कंटेम्प्रेरी, ऑलवेज यूथ है। उनका जो आप लेक्चर, उनका स्वामी जी का लेक्चर, खासकर लेटर, ये सब हर लोगों को पढ़ना चाहिए। जामन फाउंडेशन को पुनः हमारी शुभकामनाएं। उन्होंने इसको ऐसे 121वें वर्ष में दोबारा सब लोगों को बड़ी संख्या में पढ़ने पर प्रोत्साहित किया है। पढ़ेंगे, और इसको मैं मानता हूँ केवल पढ़े नहीं, इसको और आजकल डिजिटल स्पेस में फैला है, लोग पढ़े लिखे और उससे प्रेरित ले, और सचमुच में जिसको भारत के निर्माण की होगी बाकी। स्वामी जी का बहुत फेमस लेक्चर है ना, आप सब जानते होंगे। स्वामी ने कहा कि देखो ये हजारों साल से यह जो संसार सागर से हमारा देश हमें पार उतारते आया है, क्या ऐसे समय में हमारे कारणों से इस नौका में छेद हो गया, तो क्या इस नौका की आलोचना करोगे? नहीं, कहते हैं अपने शरीर के मज्जा रक्त निकाल के इसका जो छेद हो गया उसको बंद करो, डॉट में बंद करने का समय है। और फिर कहते हैं फिर यही जो नाव है ना, फिर हजारों लाखों लोगों को संसार सागर से पार उतारने का साधन बनेगा। यही हमारा महादेश है, ये प्रेरणा हमें सबको लेना चाहिए। और वही एक जगह और देखते हैं, अरे अभी तो बहुत सारी देवी देवताएं तो भूल जाओ, भारत माता ही हमारी देवता, इसी की पूजा उपासना करना चाहिए। यही प्रेरणा है, यही स्वामी विवेकानंद का उपदेश है ना। स्वामी जी कहते नौजवानों के लिए हमें वज्र की तरफ फौलादी शरीर वाले नौजवान चाहिए, है ना। ऐसे हमें नौजवानों को निर्माण करना। आज उन नौजवानों की जरूरत है। आज जो समाज में टर्मोइल है, आज जिस तरह से वीकनेस बढ़ रहा है, ऐसे समय में भारत के नौजवान अगर ठीक से संस्कारित हो, मन से, बुद्धि से, शरीर से बलिष्ठ हो, स्वस्थ हो, तो हम दुनिया को सचमुच में स्वामी विवेकानंद की तरह से जो मार्ग दिखाने में सक्षम हो सकते हैं। नमस्ते। ठीक है, आप इसको एडिट करके भेज देना। Great. Thank you, Swami ji, for your blessings. And as I said, this he was recording last night at 11:30 p.m. at the VHP Karyalaya in Delhi. But
look at the energy even at midnight. And I got his message at 12:30 a.m. the night. Gaurav, record हो गया है, आपको मिल जाएगा. So that is how he works. Great. Okay. I'll also want to something related. So what Swami Vivekanand ji said, this world is not for cowards. Do not try to fly. Look not for success or failure. Join yourself to the perfectly unselfish will and work on. With this, we'll move on to the much awaited panel discussion. So the panel discussion, so of course, the overarching theme is the speech that Swamiji gave at Chicago, but there has been one chapter which not, again, I mean, I did not know about it. Mostly people don't know about it. And that chapter is what Swami Vivekanand ji said about Shivaji Maharaj. And again, the reason to keep that as the topic was to just bring some attention to it, because एक बहुत लोगों को ऐसे ही लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी कहाँ, वो बंगाल में थे, फिर इधर, फिर महाराष्ट्र का क्या कनेक्शन, शिवाजी महाराज के बारे में पता नहीं क्या बोला, वो बंगाल में थे, साधु थे क्या, बोला होगा, यहाँ का कोई कनेक्ट नहीं है. बट देयर इज अ वेरी वेरी डीप कनेक्ट, एंड that is what we wanted to highlight. And I'll just give two lines which Swami Vivekanand ji himself had spoken, so that at the start of that chapter. So this was actually one of the devotees of Swamiji, Dr. MC Nanjundar Roy, who had this conversation with Swami Vivekanand ji on this topic. And it wasn't recorded, it wasn't written at that time, but later on, whatever he could remember, he wrote it in his memoirs. And so where it started was, a lot of you may already know those lines. दावा द्रुमदंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर, कान जिम कंस पर, त्यों मिलेच्छ बंस पर शेर शिवराज हैं. What it means, so Dawa Drupdan par, so forest fires to the forest trees, how the fire destroys the forest trees, how the tiger kills or destroys the deer herds, and how the lion is even to the stately to the elephants, or as the sun is to the darkness, or जैसे श्री कृष्ण कंस पर विद्यमान थे, how he killed Kans. Same way, the lion king Shivaji is on the hordes of Mlechas. Yeah. Mlech शब्द अभी इतना प्रयोग में नहीं आता है, but that was the term used for Mughals and those who were intent to destroy our civilization. He spoke of why he believed Shivaji Maharaj was not an ordinary mortal, was a divine intervention sent by Bhagwan Shiv. He spoke of the prophecies, specifically of a saint in Mathiran who narrated that prophecy to Netaji Palkar. And he asked Netaji Palkar to go and join Shivaji Maharaj. I spoke also that why in that period, during that period, why so many saints were there on this land. It wasn't a coincidence. That was the divine plan. And I won't speak much on it because I'm sure our panelists are also going to speak on it. I'm honored to welcome this illustrious panel. The panel does not really need any introduction again. So I'll not even attempt to, I think all of you know. So Dr. Anand Ranganathanji, he's what is not known. Everybody sees him on television and he destroys all the anti-nationals and opposition everywhere in the debates every time. But he's also one of the top scientists in Bharat today, and the work that he's doing on science side, we are really looking forward. It can really change
the landscape or some of the biggest health challenges that the country is facing today. Ashwini Upadhyay ji, 2 words, the PIL man. The speed and the force at which he has launched so many PILs. Right? I'm sure there are already case studies in other countries, and there will be case studies very soon on how this one man, a single man, one man army can really work so hard and get an entire public movement around it, and just by telling us that yes, doesn't matter what are the challenges, we can still be on the right side of the law and use the law as a weapon. And finally, our own from Pune, Shefali Vaidyaji, author, blogger, but my personal favorite, the force that drove No Bindi, No Business into a mega movement. I mean, that was the first time that we really saw people taking that stand, and it was all possible because of her. And with that, we saw things changed on ground, and we see that every year now with that things are changing for better. So that's our panel. Um, so what we'll do is I'll request each of the panelists to come here and speak um, 7-10 minutes on topic, and then we will start with the panel discussion. And towards the end of the panel discussion, we will take questions from the audience as well. So with that, I'll request first Dr. Anand Rangnathan, if you can please come on the stage and share. Over to you, Dr. Anand. Good evening, everyone. Thank you so much, Gaurav, and the organizers, Gunjan, and everyone, for giving me this honor. I hope Rahul Gandhi doesn't mind. I'm wearing a turban, although, although what goes on in the mind of Rahul Gandhi, only Rahul Gandhi and Sam Petroda know. Incidentally, Sam Petroda said that EVMs are faulty. Give me 1 year with EVM and I'll find out what is wrong with the circuitry. And I said, you've had 40 years with Rahul Gandhi, you still can't make sure what is wrong with the circuitry, and you want. But it's an absolute honor and privilege, Gaurav, to be here, to be talking about someone who has inspired not just India, but the rest of the world. And although I hate it that you touched upon, Gunjan touched upon it, and you also, that he is the man who is responsible for scientific renaissance in this country. Not many people know this, but as rightly said, it was Swami Vivekananda who inspired the setting up of Indian Institute of Science, Bangalore, and that led to the renaissance. And then Sir C.V. Raman joined it, and so many other illustrious scientists have been products of that hallowed institution. So this nation and its scientists owe an insurmountable debt to Swami Vivekananda. But we are here, I suppose, not just to talk about Swami Vivekananda and the landmark speech that he gave. I'm sure other panelists would. But in the time allotted to me, 7 minutes and 30 seconds, I would like to talk about the other issue that Gaurav touched upon, which is Chhatrapati Shivaji Maharaj and what Swami Vivekananda thought of him. Before I delve into that and say what I have to say, a couple of things, I'd like to touch upon the fact that it's not just Swami Vivekananda who's been derided by a cabal, you can say, or a set of historians or people who just self-loathing bunch of ignoramuses. It is also Chhatrapati Shivaji Maharaj who's been
um, instead of being valorized and honored by citizens of this country, has been slandered, um, has been debased, to the extent that, if you remember, almost 7 or 8 years ago, when um, the road in Delhi named after the genocidal mass murderer Aurangzeb was renamed, it led to huge protests, because a set of people said that, look, not only was Aurangzeb great, we must not touch any kind of history that we have witnessed in this country, forgetting that there is no Hitler Road in Tel Aviv. Be that as it may, a particular historian, quote unquote historian, jumped onto the bandwagon, and instead of commenting upon just Aurangzeb and the Aurangzeb Road and its renaming, he said we should not only have removed the name Aurangzeb from that road, we should not have a Shivaji Road in Delhi. Chhatrapati Shivaji Road should not be there in Delhi. And he gave 3 reasons for it. And I would like you to listen to those 3 reasons. And that historian's name was Ramachandra Guha, celebrated historian. So the person who birthed an empire from Peshawar to Plassey, one of the greatest Bharatiyas ever, who brought in untold renaissance, plural, to this motherland, was, in Guha's words, a regional hero. He was not known in the nation. Right next to the road that was then renamed, right next to Aurangzeb Road, was a road that Guha had no problems in its name. That was Bishop Makarios, who was some guy from Cyprus. Guha did not mind a Delhi road being named after Bishop Makarios, but he said no road should be named after Shivaji, because it shall feed into the majoritarianism that has become a creepingly dangerous presence in our body politic. A second and more important reason not to honor the likes of Shivaji in India's capital city is that he was essentially a regional figure. These expressions of Maratha pride make some sense in regional contexts, but not in the capital of our large and diverse country. And the third and the most important reason why we should resist the renaming of New Delhi streets after Shivaji, as he was a king in an age of feudalism. He endorsed casteism. He consolidated scriptural and social practices which led to the subordination of women. This is our celebrated historian, Ramchandra Guha, talking about Chhatrapati Shivaji. Now let me come to the other aspect, when Swami Vivekananda himself, what he thought of Chhatrapati Shivaji. As has been quoted, I repeat that verse that Swami Vivekananda said, "As forest fire is to the forest trees, a leopard to the deer herds, and a lion to the stately elephants, as the sun is to the darkness of the night, as Krishna was to Kansa, so was King Shivaji, a lion towards the hordes of Malaj." This is what Swami Vivekananda thought of Chhatrapati Shivaji. And he goes on and he says, Shivaji, is there a greater hero, a greater saint, a greater bhakta, and a greater king than Shivaji? So obviously, Swami Vivekananda did not know as much as Ramchandra Guha. Shivaji was the very embodiment of a born ruler of men, as typified in your great epics. He was the type of the real son of India,
representing the true consciousness of the nation. It was he who showed what the future of India is going to be sooner or later. And while he was giving this discourse, one doctor rose up and said, "But Swamiji, Chhatrapati Shivaji was a mere marauder. He was someone not very well respected." To which Swamiji stopped his discourse, addressed the doctor, and said, "Shame on you, doctor. What kind of history books have you been reading? Who has written the books that you are reading?" Now, obviously, through some teleportation, Swami Vivekananda must have read Ramachandra Guha's book as well. But the fact I'm trying to illustrate out here is that it is not the question that we've always had people like Ramachandra Guha and other people who have altered the truth as far as this country is concerned. It is that we have forgotten the people whom we should have remembered, who have narrated the true history. People like Swami Vivekananda and what they thought of Chhatrapati Shivaji Maharaj. And many people, especially in the history books, have said that it was through conceit that Chhatrapati Shivaji killed Afzal Khan. But if you read the true account as also narrated by Swami Vivekananda, it was nothing of the sort. It was that Afzal Khan wanted to actually, he had hidden a sword, he wanted to kill Chhatrapati Shivaji Maharaj. And what he had done before that meeting was that he had destroyed and crumbled to dust the home deity of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Bhavani. And it was to extract that revenge that Chhatrapati Shivaji Maharaj did what he did. It was for protecting the dharma. It was for doing the right thing. That is what is perhaps missing in our country. And I'll tell you what, I'll end with a small example. We Tamilians, we owe a special debt of gratitude to Chhatrapati Shivaji Maharaj. Because when news filtered in and he got to know that a Shiva temple in Tiruvannamalai has been destroyed and a mosque built over it, even though he had multiple reasons to be where he was busy in a lot of wars and conquest. He left all of that. He traveled to Tiruvannamalai. He destroyed the mosque and he rebuilt the temple. That is what doing the right thing is. And you ask and you say, well, this is all history. Let us talk of contemporary times. And I ask you, are we doing the right thing in contemporary times? To give you but one example, to end with that example as a lesson. Are we doing what Chhatrapati Shivaji Maharaj would have thought and would have done? When a 1500-year-old Hindu temple is claimed to be on Waqf land and we stay silent, I ask you, if the roles were reversed, if instead of a 1500-year-old temple, a 1500-year-old mosque, I beg your pardon, Islam is only 1300 years old, so there cannot be a 1500-year-old mosque. But if a 1300-year-old mosque was taken over by Hindus, what was the recourse for Muslims to reclaim that mosque? Would they not go to court? Is there an equivalent of Waqf Act for Hindus? Is there a Hindu Act as a set of primary defense and laws so that any disputes has to be first settled through that and then only go to the Indian courts? And I ask you, what is the right thing? To make amendments in the Waqf Act or to abrogate this draconian act altogether? What would Chhatrapati Shivaji have done? And I'll tell you what he would have done. He would have either abrogated the Waqf Act altogether, or he would have said, if you believe we are in a secular country, and if you want to have the Waqf Act, then we must have a similar act for Hindus. And then watch all those people who want the Waqf Act stay silent or rise up in protest when Hindus lay claim through the Hindu Act to thousands of mosques,
and the Muslims, instead of having to go to the courts to reclaim those mosques, have to go through this circuitous Hindu act, how would they feel? This is the discrimination that we, people who like, politicians who like to worship Shivaji, garland him, forget. When we worship someone, we stop following that person. So it's better perhaps not to worship Shivaji, but to understand what he stood for. And he stood for only one thing, doing the right thing. And Swami Vivekananda taught us that. Thank you so much. Thank you, Anandji. We'll continue with Ashwini ji, if you can please join on the stage. बहुत देर से बैठे हुए हैं, थोड़ा एक बार खड़े होके। क्योंकि आज की डेट में लिसनिंग पावर और सिटिंग पावर कम हो गई है, 2 घंटे से ज्यादा लोग बैठ ही नहीं पाते। भारत माता की, भारत माता की जय शिवाजी, जय शिवाजी। सबसे पहले मैं गौरव जी और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, एक ऐसे कार्यक्रम के लिए बुलाया, एक ऐसे दिन में बुलाया, एक ऐसे दिन को याद करने के लिए बुलाया जिसको 99% भारतीय नहीं जानते। एक मोटा मोटा मुझे आइडिया है, 99% लोगों को ये याद नहीं कि स्वामी विवेकानंद जी ने आज के दिन किस तरीके से भारत का झंडा उस समय के जो कॉन्फ्रेंस थी वहां पे लहराया था। भारत का संविधान जब बना तो इसमें 22 पार्ट है। 22 पार्ट में हर पार्ट के पहले चित्र होता था। जैसे एक पे राम लक्ष्मण सीता, एक पे हनुमान जी, एक पे भगवान नटराज, एक पे हमारे गुरुकुल, एक पे हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, एक पे भगवान, एक पार्ट के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ऐसे 22 अलग अलग चित्र थे। तो संविधान का जो पार्ट 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, और पार्ट 15 के पहले 2 लोगों का चित्र था। एक ही पेज पे 2 लोगों का चित्र। उसमें एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे थे गुरु गोविंद सिंह। क्यों लगाया गया था? पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसी पार्ट 15 से रजिस्टर होती हैं, और हम लोगों को जो वोट देने का राइट मिला है वो भी पार्ट 15 से मिलता है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो लगा देते हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टियां काम करते समय इन दोनों को याद करती रहेंगी, दोनों महापुरुषों को। और वोट देने के पहले हम ये देखेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे चल रही है, हम उसको वोट करेंगे। दुर्भाग्यवश कांग्रेस को नहीं पसंद आया, नेहरू जी को नहीं पसंद आया। उन्होंने भगवान राम के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह की फोटो हटवा दिया। और सबसे आश्चर्य की बात यह कि आज तक हम हिंदुओं ने दोबारा उन चित्रों को वापस लाने के लिए कोई 10 लाख की भीड़ इकट्ठा नहीं किया, कभी दोबारा हमने कोई बड़ा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया, कभी डिमांड भी नहीं किया। चलो बाकी तो छोड़ो, कम से कम अपने अपने राज्य के महापुरुष ही अगर अपने अपने राज्य के ही लोग मांग करते, कि महाराष्ट्र वाले मांग करते भाई छत्रपति शिवाजी महाराज को वापस ले आओ पार्ट 15 पे,
या पंजाब के सिख लोग मांग करते भाई पार्ट 15 पे गुरु गोविंद सिंह जी को ले आओ, तब भी शायद कुछ बात बनती, दुर्भाग्यवश हमने छोड़ दिया। आज की डेट में अगर स्वामी विवेकानंद जी होते तो क्या कहते, ये मैं कई बार सोचता हूं बैठे बैठे, कहते क्या हो। आप में से कितने लोग फ्लाइट पे चलते हैं? लगभग सब। फ्लाइट पे एक शब्द लिखा होता है वीटी, देखा होगा आपने। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। गूगल करिएगा, वीटी अश्विनी उपाध्याय मेरी पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में। आजादी के 75 साल के बाद हम विक्टोरिया टेरिटरी बने हुए हैं और हमारे जहाजों के ऊपर आज भी वीटी लिखा हुआ है। गुलामी के नाम चल रहे हैं। मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा जिन नामों का वर्णन बाइबल में है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बाइबल में लिखी हुई सारी बातों को लोग सच मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कुरान में लिखी हुई बात को भी लोग सच मानते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, रामचरितमानस में है, वेद में है, पुराण में है, वो उसी नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हमारे बच्चों को जब ये कहा जाता है कि महाभारत और रामायण एक काल्पनिक घटना, एक मिथ है, तो हमारे बच्चे धीरे धीरे एडमिट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान महाभारत में कहा हुआ है, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा। 5 गांव कौन था? अब उसको आप ढूंढिए, भारत के नक्शे पे मिलेगा नहीं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली बन गया, पानप्रस्थ पानीपत बन गया, सोनप्रस्थ सोनीपत बन गया, गजप्रस्थ गाजियाबाद बन गया और तिलप्रस्थ फरीदाबाद बन गया। 5 के 5 गांव बदल गए। महाभारत में लिखा हुआ है पांडव विराट में रहे अज्ञातवास में, विराट को ढूंढते रहिए। होशियार खान नाम का वहसी दरिंदा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। 51 शक्तिपीठों में हमारा पहला शक्तिपीठ जहां माता का मुकुट गिरा था, कीर्तेश्वरी, आप उसको भारत के नक्शे पे ढूंढिए, नहीं मिलेगा। क्यों? मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने मंदिर को लूटा तोड़ा, उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। छत्रपति हमारे भगवान परशुराम के पिताजी, उनका नाम था महर्षि जमदग्नि, जहां उनका आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जी होते तो सबसे पहले तो कहते ये गुलामी के नाम हटाओ, गुलामी के निशान हटाओ, गुलामी की कुरीतियां खत्म करो। बाल विवाह कैसे आया? मुगलों के समय। रात्र विवाह कैसे आया? मुगलों के समय। घूंघट प्रथा कैसी आई? मुगलों के कारण। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है कि उन्होंने यहां रोक लिया मुगलों को, इसलिए कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा, तेलंगाना में रात्र विवाह नहीं होता, दिन में विवाह होता है। क्यों डॉक्टर आनंद जी? सही है ना? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। जहां जहां मुगलों का राज है वहां रात्रि विवाह होता है, जहां मुगलों का राज नहीं था वहां दिन में विवाह। जहां जहां मुगलों का राज था वहां बाल विवाह, क्योंकि वो 15-16 साल की बच्चियों को उठा लेते थे। जहां जहां मुगलों का राज था वहां घूंघट प्रथा। आज भी वो कुरीतियां चल रही हैं। हमने कभी बताया नहीं, कभी हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं कि भारत में जितनी कुरीतियां चल रही हैं ये सब मुगलों के समय आई। 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, सब विदेशी कुरीतियां। हमारे देश में कोई एक कुरीति बताइए। जो कुरीतियां है भी, छुआछूत है या जो भी है, वो पिछले 1000 साल की कुरीति है। नहीं तो हमारे देश में तो ब्राह्मण का लड़का बाद में छत्री कहलाता था, छत्री का लड़का बाद में वैश्य बन जाता था, वैश्य का लड़का बाद में दलित कहलाता था, दलित का लड़का ब्राह्मण कहलाता था। इतना इंटरचेंजेबिलिटी थी, सारे रोटेट करते रहते थे चारों में। लेकिन हमने अपनी व्यवस्था ठीक किया नहीं। गुलामी की शिक्षा चल रही है। 1929 में जो सीबीएसई बोर्ड अंग्रेज बना के गए मैकाले के कहने पे, वो आज भी चल रहा है, बदला ही नहीं हमने। हमारे देश में तो राजा और प्रजा एक साथ पढ़ती थी। दशरथ जी के जो मंत्री थे सुमंत, वो केवट के लड़के थे, एक स्कूल में पढ़े थे। आज की डेट में मंत्री और संतरी का लड़का एक स्कूल में पढ़ता है क्या? जोर से बोलिए जरा।
कृष्ण सुदामा एक स्कूल में पढ़े, एक राज परिवार का, एक गरीब। भगवान राम निषाद राज एक स्कूल में पढ़े, एक राज परिवार का, एक गरीब। हमने गुलामी की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था हमने नहीं बदली, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदली। आज भी भारत की पुलिस 1861 वाले पुलिस एक्ट से चल रही है। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदली। अरे बात की छोड़ो, हमने नाम भी नहीं बदल पाए। हम पुलिस स्टेशन को आज भी पुलिस स्टेशन कहते हैं, उसको हम प्राथमिक न्याय केंद्र या प्राथमिक सुरक्षा केंद्र, उसका नाम तक नहीं बदल पाए। कायदे से पुलिस स्टेशन को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहना चाहिए। वही थाना, वही तहसीलदार, वही हवलदार, वही थानेदार, वही पेशकार, वही कलेक्टर, वही कानून को, वही लेखपाल जो अंग्रेज दे के गए तो वही हमने अपना क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं जो जुडिशियल सिस्टम का अध्ययन कर रहा था, पिछले 2000 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज से बढ़िया जुडिशियल सिस्टम किसी ने स्टैब्लिश नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4 कैटेगरी बनाई थी। जस्टिस विद इन आवर, ये फलाने फलाने केस का मुकदमा 1 घंटे में होना चाहिए। जस्टिस विद इन डे, इसके नेक्स्ट स्टेज वाला जस्ट 1 दिन के अंदर फैसला होगा। जस्टिस विद इन वीक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड होगा। अगर सोमवार को मुकदमा आया, शनिवार तक डिसाइड हो जाना चाहिए। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस जस्टिस विद इन मंथ, अगर 1 तारीख को आया तो 30 तारीख तक उसका फाइनल डिसीजन हो जाना चाहिए। आज जस्टिस विद इन डिकेड्स चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। हमने न्याय व्यवस्था नहीं बदली, हमने जो है गुलामी की कर व्यवस्था भी नहीं बदली, हमने गुलामी की श्रम व्यवस्था भी नहीं बदली, हमने गुलामी की रोजगार व्यवस्था भी नहीं बदली, हमने गुलामी के संस्कार भी नहीं बदले, हमने गुलामी का इतिहास भी नहीं बदला। डार्विन थ्योरी आज भी पढ़ते रहते। बंदर आया, बाद में बड़ा होकर इंसान बन गया, फिर एक कट ऑफ डेट आई, उसके बाद बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया। क्यों? अगर बंदर से इंसान बड़े हो रहे थे तो बाद में मान लो पहले 1-1 लाख बंदर इंसान बन रहे थे, तो बाद में 1000-1000 बंदर बनते। पिछले 2-3 हजार में साल में कोई बंदर इंसान बना क्या? नहीं। वो हमें गुलामी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, डार्विन ने बता दिया, हमने डार्विन को याद कर लिया। हमने अपने वेदों को नहीं देखा कैसे कैसे चला है। आज की डेट में छत्रपति जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, भारत को जोड़ो, हिंदुओं को जोड़ो, हिंदुओं को हिंदू बनाओ। हिंदू हिंदू कैसे बनता था आप समझिए? कास्टिज्म तो था ही नहीं, कास्ट सिस्टम तो था ही नहीं। कास्टिज्म तो क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। 2000 साल पहले भारत में कोई कास्ट ही नहीं था। कर्म के आधार पे था, तेल निकालने वाला तेली, कपड़ा धोने वाला धोबी, जूता सिलने वाला मोची, दूध निकालने वाला ग्वाला, ऐसे हो जाता था। जो घोड़े से गिर गए घोड़ पड़े। भारत में ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। भारत में गोत्र व्यवस्था थी। और आज भी कोई शुभ काम करिए आप तो पंडित जी आपसे क्या पूछते हैं? नाम क्या है? और जोर से बोलिए, क्या पूछते हैं? आपका जाति पूछते हैं क्या? नहीं। इस गोत्र व्यवस्था का फायदा क्या था समझिए। जो गोत्र तमिलियों का है, जो मलयालियों का है, वही बिहारियों का है, वही बंगालियों का है, वही कश्मीरियों का है, वही यूपी के लोगों का है। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। जो गोत्र कन्याकुमारी के लोगों का है वही असम के लोगों का है, वही बंगाल के लोगों का है। तो अगर हमने गोत्र व्यवस्था को दोबारा रिवाइव किया होता तो जातिवाद खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित का गोत्र एक है। गौरव जी का गोत्र गर्ग है ना। और जानते हैं बनियों में कास्ट टाइटल यूज होती है, सरनेम गर्ग। आप सोच लीजिए, गौरव त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, इनका भी गोत्र गर्ग है। और पूरी एक कास्ट है, सरनेम है गर्ग। ज्यादा मैक्सिमम कौन यूज करता है? माहेश्वरी समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग करते हैं। मैं भारद्वाज हूं। प्रयाग और अयोध्या के आसपास के जितने ब्राह्मण हैं भारद्वाज, क्योंकि वहां भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। आगे चलिए, क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज। मुजफ्फर चलिए, जाट और गुर्जर का गोत्र भारद्वाज। हरियाणा चलिए, सैनियों का गोत्र भारद्वाज। अगर हम अपनी ये हमें पता हो जाए कि यार सबका गोत्र एक है तो कास्टिज्म खत्म होगी कि नहीं? हम हिंदू बनेंगे कि नहीं? गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। जैसे ही पता चल गया
कि रामलिंगम का भी वही गोत्र है जो राम कुमार का है, रंगनाथन का भी वही गोत्र है जो रंगनाथ का है। जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? भाषा अलग है, एक मलयाली बोल रहा है, एक तमिल बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है, लेकिन गोत्र कॉमन है, गोत्र तीनों का भारद्वाज है, तो जुड़ गए। भाषावाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म। अगर वास्तव में हम हिंदुओं को हिंदू बनाना चाहते हैं, ये गुलामी की जाति व्यवस्था खत्म करना चाहिए, वापस हमें गोत्र व्यवस्था पे आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत अतुलनीय योगदान रहा, उसको बताने के लिए 1 घंटे चाहिए, टाइम मिला है 10 मिनट, इसलिए अपनी बात खत्म करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अश्विनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम 1 घंटे नहीं, मैं मुझे पता है हम 4 घंटे भी कम पड़ेंगे अगर हम सुनने बैठे तो। अब मैं विनती करूंगा शिफाली जी से, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। धन्यवाद गौरव। पहली बात तो प्रोग्राम पुणे में है और शुरुआत में अगर शिव गर्जना नहीं हो तो कैसे हो सकता है, और वो भी इतना शांति से नहीं। ऐसा लगता है आप में से कोई किसी ने खाना नहीं खाया हो, इतने धीमे सुर में आप बोल रहे थे शिवाजी महाराज की जय। जरा जोर से बोलिए। बोला छत्रपति आपदामपहर्तारं की दातारं सर्वसंपदां भवानी लोकाभिरामं श्रीरामं जय भूयो शिवाजी। भूयो नमाम्यहम्। रत्नाकराधौतपदां पहले तो मैं गौरव का हिमालय किरीटिनी। आभार मानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस दिन में 11 सितंबर को इस अवसर पे बात करने के लिए उन्होंने बुलाया। कुठल्या भाषेत बोलू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश? ठीक है, दोनों भाषाओं में बोलती हूँ, थोड़ा सा मराठी थोड़ा सा हिंदी। मराठी समझना चाहिए ना, जो पुणे में है उनको तो। Doesn't matter what your mother tongue is. If you're in Pune, you should know Marathi. If I live in Bangalore, I should know Kannada. If I go to Chennai, I speak Tamil. Very bad Tamil. People laugh at me, but I make it a point to speak Tamil. That is how it should be. Languages are meant to communicate. They're not meant to divide people. They're meant to unite people. अंत में बात करने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो भी मुझे कहना होता है या जो भी मैं कहना चाहती हूँ ऑलरेडी आनंद और अश्विनी जी कह चुके हैं, लेकिन पुणे से हूँ, शिवाजी महाराज की भक्त समझती हूँ अपने आप को, और ये जो कवि भूषण का जो इंद्र जिमी जम्म पर जो कोट किया है वो स्वतः बाबासाहेब पुरंदरेंच्या आवाजामध्ये एका वेगळ्या खासगी बैठकीत ऐकायचं मला भाग्य लाभलं होतं, आणि त्यावेळेला अंगावर आलेला काटा, जो रोमांच उठे थे मेरे शरीर पे, वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मैं आज भी जब वही शब्द सुनती हूँ तो मेरे मन में बाबा साहेब पुरंदरे की आवाज आती है और बस रोमांच आ ही जाते हैं। कितने एहसान है शिवाजी महाराज के हम पे, जो कवि भूषण ने ही बोला है, शिवाजी ना होते तो सुनत होती सबकी। ये सच है, क्योंकि शिवाजी महाराज यहाँ जन्म लिया, शिवाजी महाराज जैसे वीर राजा ने, इसीलिए हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं। आज हम सैफरन पटका पहनने का साहस कर रहे हैं। अगर शिवाजी महाराज नहीं हुए होते तो हम इस तरह इस हॉल में नहीं बैठ सकते थे, हम अपने धर्म के बारे में बात कर ही नहीं सकते थे। आज का विषय है स्वामी विवेकानंद जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा। एक्चुअली इस कार्यक्रम के लिए जब तैयार हो रहे थे और गौरव ने बोला कि ये फेटा बांधना है और ये जो कषाय वस्त्र हैं जो पहनने हैं, तो सच कहती हूँ पहले तो मेरे मन में थोड़ी सी झिझक आई थी कि क्या सचमुच मेरी योग्यता है
ये कषाय वस्त्र पहनने की? क्या सचमुच मेरी योग्यता है ये सैफरन पटका पहनने की, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने इस देश की कई हिंदू वॉरियर्स ने अपनी जान दी है? जो वस्त्र खुद स्वामी विवेकानंद जी ने पहने थे शिकागो में 1893 में, क्या मेरी योग्यता है? उत्तर तो साफ है, योग्यता तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी बहुत साहस करके मैंने ये चोगा पहन लिया, ये सोच के कि शायद ये चोगा पहन के स्वामी जी की जो योग्यता है, स्वामी जी का जो चारित्र्य है, स्वामी जी का जो ज्ञान है, देश के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसका एक कितना बोलूं, 100,000 अंश भी अगर मुझ में आ गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। ये जो किताब है स्वामी विवेकानंद जी ने शिवाजी महाराज के ऊपर जो कहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, सिर्फ 48 पेज की किताब है, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, इंटरनेट आर्काइव्स पे, और बेलूर मठ के साइट पे भी वो मिलती है। आप जरूर पढ़िएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है एक बार पढ़ने में, लेकिन अगर आप उस किताब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस हद तक शिवाजी महाराज के चारित्र्य का अभ्यास किया था। जब वो बात करते हैं, जिसके बारे में गौरव ने थोड़ी सी बात की है, कि जब ये नंजुंडराव उनसे मिलने के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद कवि भूषण का वो जो पटका जो उन्होंने कोट किया था इंद्रजिमी जंब पर, वो कोट कर रहे थे। तब नंजुंडराव ने उनको पूछा, लेकिन हमने तो स्कूल में पढ़ा है कि शिवाजी एक लुटेरे थे, शिवाजी महाराज ने कई सारे प्रदेशों से माउंटेन रैट, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस उनको बुलाते थे। तब स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा आया था, तब उन्होंने बोला था कि तुम मराठा होकर, महाराष्ट्र शब्द यूज किया है उसमें, तुम खुद नहीं जानते हो कि अपना इतिहास क्या है, तुम खुद नहीं जानते हो तुम्हारे पूर्वज क्या हैं, तुम खुद नहीं जानते हो कौन सी धरोहर के तुम उत्तराधिकारी हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर वो उनको शिवाजी महाराज की कहानी बताने लगते हैं। और उन्होंने जब जैसे गौरव ने बोला कि उन्होंने तब तो नोट्स नहीं लिए थे, उसके बाद अपनी मेमोरी से उन्होंने पूरा उसको रिप्रोड्यूस किया है, और उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस भी दिए हैं। लेकिन शिवाजी महाराज के बारे में जब विवेकानंद जी बोलते हैं, विवेकानंद जी कॉल्स हिम द ग्रेटेस्ट किंग इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, द ग्रेटेस्ट हिंदू, आई would go far ahead and say that he is the greatest Hindu India has produced in the last 1000 years after Adi Shankaracharya. I call him the greatest Hindu because not only did he follow the precepts of dharma to the T, he had one very important quality, which was Shatrubodh. Nobody understood the enemy better than Shivaji Maharaj, which is exactly why he could divide strategies. He could go all the way to Agra, except to a humiliating treaty of Purandar, because he had to for the sake of his people. But he could anticipate what Aurangzeb was going to do at every point of time. There was a game of chess being played. He could anticipate that this was going to happen, and Shivaji Maharaj was always 2 steps ahead, which is why he came back safe and sound from Agra. It is not easy. Aurangzeb, read Sikh history. See what Aurangzeb has done to the Sikh gurus, the valiant Sikh gurus. Shivaji Maharaj was the only king, was the only person, was the only adversary who went into the trap and came back out safely. And which is why Aurangzeb, in his last will and testament, in the last letter that he has written when he was dying, a broken man, because his dream of ruling over India and destroying the Maratha Empire did not happen, he writes in his last letter to his son that the greatest regret of my life is the escape of Siva.
If Siva had not escaped from Agra, my dream of turning this land into the land of the believers, quote unquote, would have become a reality. It's only Shivaji Maharaj that stopped it from happening. And you can see that. Which is why it hurts me today. And I want to make it a point. I'm not a politician, so I don't really care what people think about what I say. Which is why it hurts me today that in Maharashtra, in the land that Shivaji Maharaj belonged to, we are now turning him into a caste icon. He was not. He was first and foremost a Hindu king, not a Maratha king, not a Maharashtrian king, not a king of the Brahmins, not a king of the Kshatriyas, not a king of the Rayats, not a king of the Shudras. He was a Hindu king, and that is why his kingdom was called Hindavi Swaraj. It was not called a Maratha Swaraj. It was not called a Maratha Empire. And he felt that he had the blessings of the goddess, and it was true, behind him. And आई भवानींचा आशीर्वाद त्यांच्या मागे होता, म्हणून हिंदवी स्वराज्य प्रत्यक्षात आलं. आणि ही खरी गोष्ट आहे जी ह्या हे पुस्तक जर तुम्ही वाचलं, स्वामी विवेकानंद ऑन शिवाजी, देर इज it's written in amazing detail how Jijamata prayed to Ai Bhavani, and when Shivaji Maharaj was going to meet Afzal Khan, she actually took cowl from Ai Bhavani, and Ai Bhavani told her, Ai Bhavani gave the cowl to Shivaji Maharaj that everything is going to be okay, he is going to come safe and sound. Remember, at that point of time, Shivaji Maharaj was very young. Afzal Khan was a 6 feet 3 inches tall, huge Sardar who had the might of the whole Adil Shahi empire behind him. He was told he killed all his wives. 65 बेगमा मारून खान मावळामध्ये उतरला होता, केवळ आणि केवळ शिवाजी महाराजांचं छोटंसं, तेव्हा अगदी छोटंसं असलेलं राज्य संपवण्यासाठी. If you talk to the biased historians like Ramchandra Guha, they will say that but Afzal Khan didn't really have a religious angle to his Swari. It was just a fight between two kings. There was no religion involved there. He didn't want to destroy Hinduism. He just wanted to destroy this challenger to the Adil Shahi kingdom. It was simply a fight for political supremacy. If that was true, then why did Khan destroy Pandharpur? If that was true, why did Khan destroy the Ganpati temple in Vai? If that was true, why did Khan went to Tulzapur? He went out of the way. Tulzapur was not on his route. He went out of his way to go to Tulzapur to destroy the temple of Bhavani, and he killed cows there in the temple to desecrate the temple. If there was no religious angle, then why did Afzal Khan have to do all of these things? The message was very clear that he was not just destroying an empire, he was destroying a Hindu empire. And that was why Nizam Shahi was against the Hindavi Swarajya, Adil Shahi was against the Hindavi Swarajya, and finally even the Mughals were against Hindavi Swarajya, not because it was just any kingdom, no. They were against it because it was a Hindu kingdom, it was a Hindu Sarvabhauma Rajya, and that Shivaji Maharaj proved when he got Shivarajyabhishek done. Why did he do Shivarajyabhishek? Not because he wanted that crown, he didn't care for it, he was a Upabhogashunya Swami. So why did he feel the need for legitimacy? Why did he feel the need to have this ceremony according to the Vedic rites? It was not for him. It was to tell the enemies of Bharat that तुमच्या नाकावर टिचून भारतामध्ये एक हिंदू साम्राज्य परत जन्म घेत आहे आणि मी नसलो तरी हे साम्राज्य तसंच जिवंत राहणार आहे. आणि ते तसंच झालं. 1818 साली जेव्हा ब्रिटिश ह्या भारताचे शेवटी सार्वभौम रूलर झाले, whom did they defeat? They defeated the Marathas. So from 1630, when Shivaji Maharaj was born, to 1818,
the most dominant power in India was the Hindu kingdom established by Chhatrapati Shivaji Maharaj. And that is a debt that we can never forget. That is a debt that we can never live up to. And that is a debt we should always be grateful for. Which is why Swami Vivekananda, when he talks about Shivaji Maharaj, he says that Shivaji Maharaj was the greatest hero. He was the greatest bhakta. He was the greatest king. And he was the greatest son that Bharat Mata has ever produced. Thank you. Thank you, Shivali ji. I know we are running late and short of the time, but still we'll we'll continue with the panel discussion. We'll keep it short, and we'll take few questions from the audience as well. For that, first I'll call upon Amit Thananpara, if you're here. Yeah, Amit. So please, you can come to the stage and you can formally then welcome all the panelists on the panel. Yeah, please. I request all the panelists, so please come on the stage. Anand ji, Ashwini ji, Shifali ji. I request Amit to formally again welcome. Thank you once again to all the panelists for really already awakening all of us, I'll say, with you have shared a lot already about Swami Vivekananda's teachings and what he said about Chhatrapati Shivaji Maharaj. I'll start with a very basic question first. So, as Swami Vivekananda also allude to that the impact of the 1893 speech. So, I want all of you to just in a minute just speak out what do you think about the impact and how do you see the impact of Swamiji's teachings and specifically that 1893 speech, how it has impacted our civilization and the nation. So if you can quickly speak about it. So Anandji first. I think it brought to the fore in more ways than one what the essence of Hinduism was. At a time and in the time when people knew very little about it, when of course India was
totally subjugated. It was being destroyed from outside and also from inside. Everything that it held dear, everything that was modern in India, including the status of education, was so advanced, more advanced than the United Kingdom or England, in fact, was being destroyed. At that time, I think Swamiji told about what the essence of Hinduism is, what Hinduism stands for. And I think two things come out very beautifully, Gaurav, in that you have juxtaposed Swami Vivekananda with Chhatrapati Shivaji. Because many people mistake what Hinduism stands for till today, even today. And the fault squarely lies with Gandhi. I don't mean Rahul Gandhi, I mean Mahatma Gandhi. Although both are possibly minted from the same coin. Because of Mohandas Karamchand Gandhi, Hinduism, the essence of Hinduism, the meaning of Hinduism has been totally turned upside down as to something which is passive, which does not react to atrocity, which is absolutely willing to lay itself down for the proponents of Hinduism, followers of Hinduism, to commit mass suicide in the face of intolerance. The so-called ahimsa at all costs. And of course, I don't need to refer to what Mahatma Gandhi said, but I will, because that is what, for him, at the end of his rather illustrious career, the essence of Hinduism meant, which was that in the wake of those terrible partition riots, he said that all Hindus should just lay themselves down and be willing to be killed en masse by Muslims. And if Muslims were to kill each and every Hindu, that would be, I'm paraphrasing him because I have the exact quote, I haven't brought it out. It would be a proud moment. We would be ushering in a new world, a new India. This is what he said. And that is why it is important for people to realize that that is not Hinduism. Hinduism is not tolerance at all costs, so that you can even accept injustice. Hinduism is Shivaji. Hinduism is tolerance, but at the same time, Hinduism is not bowing to intolerance. That is what Shivaji is. And that is why juxtaposition of Swami Vivekananda with Shivaji is so priceless for us. Because we've been so brainwashed and conditioned by this warped meaning of Hinduism of Mahatma Gandhi that it exists till today. And I don't need to go very far, but to give you 3 or 4 examples of how it still exists today. We have the Places of Worship Act that bars Hindus from legitimately seeking to reclaim their demolished temples. Now I ask you, in which democracy, in which civilized country can a man not even approach the courts? Forget about what the courts would adjudicate. They may adjudicate one way or the other, fine. But in this country, a Hindu does not even have the right to approach the court to say, my lord, this is unfair. I want Gyan Vyapi mosque back, mandir back. Because a mosque has been built there, I can see it. I want Krishna Janamsthan back. Because a masjid has been built on top of it, I can see it. I want the broken Krishna idols extricated from the Jahanara mosque in Agra. Because I can see them. But you are barred from doing that. You're barred from asking for your legitimate rights. And this is what conditioning can do to you, where you warp a meaning of what Hinduism is. And you believe that, yes, we can be tolerant towards intolerance. I took the example of the Waqf Act.
Do Hindus have a similar act? If not, have the Hindus ever asked the government, why don't we have a similar act? This is the problem in this country. And you know what happened when somebody told that a Hindu temple has been demolished and a mosque built on it? What would Mahatma Gandhi have said? But what did Shivaji do? He left everything. He went all the way to Tamil Nadu. And he got those temples back. Because Hinduism does not mean bowing to injustice. Hinduism means fighting injustice. And that is why this juxtaposition of Swami Vivekananda with Chhatrapati Shivaji is absolutely vital to the psyche of this country. Thank you. Thank you. Thank you, Anand. Thank you, Anandji. Shefali ji, please. Yeah. I don't really like talking about problems because we all know what the problems are. I prefer to talk about solutions, and I prefer to talk about what we can learn from both Swami Vivekananda's life and from Chhatrapati Shivaji's life. See, even when Chhatrapati Shivaji Maharaj was born and he became who he was, you must remember that the condition of the average Hindu was far, far, far worse than what we have today. So let's not compare situation of 1630 and what Hindus lived back then to what Hindus are living right now in 2024, because it's like comparing apples and oranges. Remember that Shivaji Maharaj's own aunt, his Kaku, was taken from Nashik, where she had gone to take a bath in the Godavari, by a Muslim Sardar. She was raped and she became a part of the Janan Khana of that Sardar, his own aunt. She was not any ordinary woman. She was the wife of one of the Sardars of Nizam Shahi. But even then, there were no rights for Hindus. And when Shivaji Maharaj started this fight for establishing a Hindu kingdom, who were his first enemies? It was not Adil Shah. It was not Nizam Shah. It was not even the Mughals. Who were his enemies? Who? Who was the Patil of Ranja? Was he a Muslim? Who was Chandrarao More? Was he a Muslim? The point is, Hindu society, even back then, was passive, did not want to fight for their rights, did not want to come together, did not want to fight for a cause that was greater than them. Let's face it, that's a fact. Shivaji Maharaj had a personality. Shivaji Maharaj had that divine grace. Shivaji Maharaj was a leader that is born once in 1000 years. That's why he could take that force together and sow that idea of a Hindavi Swaraj in the minds of ordinary Hindus. And that is his greatest contribution to Bharat. He made ordinary Hindus of Maharashtra. Who were the Maules? They were ordinary Shetkaris. They were not born in Sardar families. They were not born as soldiers. They were basically the Rayat of this place. But Shivaji Maharaj made them a fighting force. He made Brahmins fight. He made Kshatriyas fight. He made all caste, they used to call Atra Pagad Zati. He made them fight as Hindus. He gave them an identity that was greater than their caste. He gave them an identity that you are above all a Hindu, and having a Hindavi Swarajya, your own kingdom is your destiny, is your right, and that is what you should be fighting for. And if you look at Swami Vivekananda's life, you will also see, and even in this speech, even today, forget 1893, even today, if you read that speech, you will see that the easiest explanation of what Hindu Dharma is, in very short, today Modi ji has tweeted a link of this speech, Belur Math. You can go there and you can read the entire speech. And you will see that he has talked about Murti Puja. He's talked about the importance of Murti Puja. He's talked about the significance of Murti Puja. Even though he's a monk, even though he has renounced everything, he does not talk about leaving everything and being passive. He talks about fighting.
He tells the youth, arise, awake, and do not rest till your work is done. He talks about Karma Marga, which is why he's known even today as Yodha Sannyasi, and his birthday we celebrate today as a National Youth Day, because he always talked about action, he always talked about solutions, he always talked about the way forward. And that, I think, is the relevance of Swami Vivekananda's thoughts today, yesterday, and tomorrow, and it will continue to be. धर्म की, जोर से बोलो भाई, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना अपने राज्य का विकास नहीं हो सकता। देश तो छोड़िए, विश्व तो छोड़ दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अधर्म का नाश। पहले अधर्म का नाश छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने तरीके से किया। आज की डेट में अधर्म का नाश करने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास पुलिस सिस्टम चाहिए, वर्ल्ड क्लास जुडिशियल सिस्टम चाहिए, वर्ल्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए। हमने हर दिशा में प्रयास किया। अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, राफेल खरीद लिया, वर्ल्ड क्लास हाईवे बना लिया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, सब कुछ वर्ल्ड क्लास किया। अधर्म का नाश करने वाले हमने सिस्टम नहीं किया। कमलेश तिवारी से लेके कन्हैया लाल तक हजार लोगों की बहुत ब्रूटल मर्डर, बहुत हजार लोगों का बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ। न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई, न किसी को फांसी हुई, न किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई। 1920 में श्रद्धानंद जी से और 2008 में लक्ष्मणानंद जी तक हजारों सन्यासियों की हत्या हो गई जो धर्मांतरण रोक रहे थे। न किसी मारने वाले को फांसी हुई, न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को सिटीजनशिप खत्म हुई। अधर्म का नाश पे हमने सोचा ही नहीं। हम अभी भी, जो आनंद जी ने कहा, हम अभी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसी रास्ते पे आगे चल रहे हैं और अधर्म का नाश करने के लिए सोच ही नहीं रहे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना रोल मॉडल नहीं बना रहे। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम ये देख ही नहीं रहे उनका जुडिशियल सिस्टम क्या था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। बार बार लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बताते हिंदू राष्ट्र में होगा क्या। हमसे कई लोग पूछ रहे हैं, आज का दिन भी अच्छा है इसलिए मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब सबल भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब संपन्न भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब स्वस्थ भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब साक्षर भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब स्वच्छ भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब समृद्ध भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब सशक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब सुरक्षित भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब समावेशी भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब स्वावलंबी भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब स्वाभिमानी भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब सात्विक भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब शाश्वत भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब संवेदनशील भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब भाषावाद मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्षेत्रवाद मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब तुष्टीकरण मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब नशा मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब घूसखोरी मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब कमीशनखोरी मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब जमाखोरी मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब कालाबाजारी मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब आतंकवाद मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब अपहरण मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब मानव तस्करी मुक्त भारत, हिंदू राष्ट्र का मतलब घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, इन सभी समस्याओं को रोका जाए। दुर्योधन का ननिहाल गंधार आज की डेट में अफगानिस्तान हो चुका है। न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे, न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको आज की डेट में पाकिस्तान कहते हैं। हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित खत्म हो गए, अगड़े पिछड़े खत्म हो गए, दलित सवर्ण खत्म हो चुके हैं। ईस्ट बंगाल, जो पहले ईस्ट बंगाल कहलाता था, आज की डेट में अगले 2 से 3 साल के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित भी खत्म हो जाएंगे, हिंदू जैन बौद्ध सिख भी खत्म हो जाएंगे। मेरी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है जिसमें मैंने आंकड़े दिए हैं। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में 9 स्टेट। इसका मतलब 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है।
भारत में 800 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी कंप्लीटली बदल चुकी है। इसका मतलब 25% जिले। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मतलब 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। अभी भी अगर हमने कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया और डेमोग्राफी पर डे बदल रही है। डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मैं आज कहता हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। मैं आज पूना वालों से कहता हूं, 1999 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, 2024 में इलेक्शन हुआ वो लोकसभा का। जो सेंसस होता है वो 10 साल पे होता है, लेकिन वोटर लिस्ट हर इलेक्शन के पहले अपडेट होती है। आप 99 का लोकसभा का चुनाव, 2024 के लोकसभा की वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपकी नींद गायब हो जाएगी। इतना बड़ा चेंज आ चुका है आपके पुणे में भी। मैं तो काफी दिन से इस पे रिसर्च कर रहा हूं, 25 साल पुरानी लोकसभा क्षेत्रों पे, और हर एक राज्य में मैंने 2-2, 3-3 ऐसे लोकसभा पकड़ी है वहां की डेमोग्राफी देखने के लिए, जहां 99 तक बहुत अच्छा था। घुसपैठिए आ रहे हैं, भारत को जलाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में आधार बनवाते हैं, नगर निगम में जाके 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तहसील में जाके 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हैं, फिर 2000 रुपए में राशन कार्ड बनाते हैं, आरटीओ ऑफिस जाते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, 12 से 15,000 रुपए में घुसपैठिए 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। फिर कोई इलेक्शन आता है लोकसभा, विधानसभा, पार्षद, प्रधान का, उसके बाद वहां लोकल नेता से मिलते हैं और उनको वो वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। 15,000 रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद जनधन में खाता खुलवा लेते हैं और 2 साल के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता ले लेते हैं। मुफ्त में अनाज, मुफ्त में राशन, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, मुफ्त में वजीफा, सारा का सारा आयुष्मान कार्ड, सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 2017 में मेरी पीआईएल मैंने फाइल किया था, उस समय मैंने आंकड़े बताए थे, 5 करोड़ आ चुके हैं। आज की डेट में ये जनसंख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। यानी आपके अंदर 2 ऑस्ट्रेलिया घुसपैठियों से बन चुका है भारत के अंदर। ये बहुत बड़ा खतरा है। धर्मांतरण, पूरी फंडिंग बाहर से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है, बैंक के जरिए हो रही है। कभी गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय करके मेरी पीआईएल चल रही है। 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है विदेशी बैंकों के जरिए, जिनकी ब्रांचेस भारत में है। वो बाहर से पैसा भेज रही है आनंद जी, और यूज कर रही है आरटीजीएस और एनईएफटी। आरबीआई को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आरबीआई का सॉफ्टवेयर तो ये देखता है कि अच्छा एनईएफटी है, आरटीजीएस है, तो भारत के अंदर घूम रहा है पैसा, और पैसा आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है। 50,000 करोड़ हर साल आ रहा है। ये जितने आप देखते हैं ना देश विरोधी बात करने वाले, इसमें कोई बुद्धू नहीं है, इसमें कोई बेवकूफ नहीं है, ये उनका रोजगार है। एक एक देश विरोधी ट्वीट करने के लिए 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। एक एक देश विरोधी बात करने के लिए 5-5 लाख रुपए मिलता है। एक एक देश विरोधी बात सोशल में, उसमें आपके टीवी डिबेट में करने के लिए आनंद जी, उनको बाकायदा पर अपीयरेंस टीवी में 5-5 लाख रुपए मिलते हैं, जो आप जिनसे आप भिड़ते रहते हो। आप तो फ्री में भिड़ते हो, उनको पैसा मिलता है, उनकी नौकरी है वही। आज के बाद आप समझ लेना, वो कोई फ्री में आते नहीं बात करते हो। अगर आप हमने कहना चाहते हैं मैं भी एंटी नेशनल बन जाऊं? अगर हमने भ्रष्टाचार नहीं खत्म किया ना, तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा और घुसपैठ नहीं रुकेगी। और धर्मांतरण, घुसपैठ नहीं रुका, हमारे लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है। बुरा मत मानिएगा, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, इसलिए कड़वा सच बोल रहा हूं। जुलाई में बांग्लादेश के लोगों को, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को पता था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? बताइए, पता था क्या? नहीं। जुलाई 1946 में राम जेठमलानी जी को, आडवाणी जी को, मिल्खा सिंह को, पृथ्वीराज कपूर को, प्रेम चोपड़ा को, सुनील दत्त को, गुलजार साहब को, इन लोगों को पता था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? पता था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। दिसंबर 1989 में कश्मीर को लोगों का पता था क्या कि 1990 जनवरी में क्या होने वाला है? नहीं पता था। हम बहुत बड़े बम के ऊपर बैठ रहे हैं। हम भारत को बर्बाद करने को अलाउ कर रहे हैं। घुसपैठ के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, और घुसपैठ रुकी नहीं है, घुसपैठिए बाहर गए नहीं है, और घुसपैठ पर डे हो रही है।
धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदल रही है और धर्मांतरण आज भी हो रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा। जनसंख्या विस्फोट के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में 15 से 20 बच्चे? जरा हाथ उठाना भैया, कोई है क्या? चलिए मैं आपको दिल्ली में दिखाता हूं, भारत की राजधानी में 15 से 20 बच्चों का परिवार, एक नहीं कम से कम 1000 परिवार दिखाता हूं दिल्ली में, देश की राजधानी में, जिसको सबसे पढ़ा लिखा। अरे बाकी तो छोड़ो, केरल में मैं आपको दिखाता हूं 15 से 20 बच्चे वाले परिवार। जो लोग कहते हैं केरल में लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया है और लिटरेसी बढ़ने से जनसंख्या रुक जाती है, ये बहुत बड़ा मिथ है। जनसंख्या, घुसपैठ, धर्मांतरण, और हम एक बर्बाद करने के लिए दो और टूल यूज कर रहे हैं। रील पे इस समय पैसा आ रहा है बाहर से। हमारी यंग जनरेशन रील में फंस चुकी है और ड्रग में फंस चुकी है। बहुत बड़े पैमाने पे ड्रग आ रही है, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में फैलाई जा रही है। गांजा, चरस, अफीम फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है? बर्बाद करने के लिए। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा लड़का भी, बच्चा भी बर्बाद हो रहा है और हमारे घर का पैसा भी जा रहा है। और वो जो ड्रग स्मगलिंग से पैसा आ रहा है, उससे घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उससे धर्मांतरण किया जा रहा है, उससे मदरसे भी बन रहे हैं, उससे मस्जिदें भी बन रही। और रील के ऊपर जो इतना बड़ा फंडिंग आया है, हमारी यंग जनरेशन तो कोई रील में पूरी तरीके से पागल होती जा रही है, केवल पागल होती जा रही है। ये बहुत बड़ा खतरा है। अश्विनी जी, क्योंकि ये पैनल डिस्कशन है, मैं थोड़ा सा वी कैन हैव अ स्मॉल डिस्कशन। गौरव, इफ यू अलाउ। बहुत ही आसान सवाल है अश्विनी जी से। जो भी कहा एकदम सच का, सारे फैक्ट्स, बट सवाल यह है, सरकार तो आपकी है, आप किसको कोस रहे हैं? कांग्रेस को कोसेंगे? पिछले 10 साल में आप ये सारे मुद्दे एक एक करके एड्रेस कर सकते थे। आप कह रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने हिंदुओं के हाथ बांधे हुए पीछे, टेम्पल्स कंट्रोल कर रखे हैं। जो लाखों करोड़ों रुपया जो हिंदू टेम्पल्स, अपने स्कूल्स, पाठशालाएं, हॉस्पिटल्स कर सकते हैं कि हिंदू फोल्ड छोड़ के किसी और रिलीजन के उसमें ना जाएं, क्योंकि वहां पे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो आप कर नहीं रहे। आरटी का आपने 93 अमेंडमेंट के साथ आपने जोड़ दिया उसको। सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स के ऊपर है कि 25% रिजर्वेशंस दें, मुस्लिम रन स्कूल्स, क्रिश्चियन रन स्कूल्स पे नहीं है। तो हिंदू, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिंदू रन स्कूल्स हैव बीन क्लोज डाउन। वो सारे बच्चे अब मुस्लिम रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स में जा रहे हैं। वहां पे सटली और नॉट सो सटली उनका धर्मांतरण होगा। पॉपुलेशन डेमोग्राफी से ज्यादा डेंजर है डेमोग्राफी शिफ्ट। वो शिफ्ट आपके सामने हो रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो बाद में देखेंगे, पहले पॉपुलेशन शिफ्ट देखिए। और पॉपुलेशन शिफ्ट दो तरीके से हो रहा है। एक, मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा है एरिया में। किराना का देखिए, 38% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, आज 97% मुस्लिम पॉपुलेशन। ऐसे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे हो रहा है। आप एग्जाइल देखिए, जो वहां पे जेनोसाइड हुआ कश्मीरी हिंदूज का, 7 लाख, कितने लोगों को वापस रिहेबिलिटेट किया गया। फाइनली आप अगर ये देखें कि सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, सिचुएशन ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में देयर इज 1 मॉस्क फॉर एवरी 1300 मुस्लिम्स, 1 मॉस्क फॉर एवरी 1300 मुस्लिम्स। इन हिमाचल 98% Hindu population, there is 1 mosque for every 300 Muslims. You know what is going to happen in 30 years from there, from now. What is happening in Uttarakhand? तो वही है, आप मेरे बड़े भाई नहीं, मित्र हैं, सब कुछ हैं। आपने जितना ये उजागर करने के लिए किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो। लेकिन फिर वही सवाल, सरकार तो आपकी है। देखिए, आनंद जी की पीड़ा मैं समझता हूं। मैं पहले इंजीनियर था, तो मुझे वाई एनालिसिस करने की आदत है। हर प्रॉब्लम की मैं 5W एनालिसिस करता हूं। और इंजीनियरिंग छोड़ के, मारुति पहले गवर्नमेंट की फैक्ट्री हुआ करती थी, मैं मारुति में था, वो छोड़ के मैं आया इसी काम के लिए। मुझे लगा कि भारत को बचाने के लिए 2 ही जगह है, या तो सुप्रीम कोर्ट या संसद। संसद में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, आज तक पहुंच ही नहीं पाया। तो मैंने कहा एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, ये हमारे हाथ में है। भगवान की कृपा से उस समय मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह थी, मेरी पत्नी को 8,500 की नौकरी मिल गई। जैसे मेरी पत्नी को अध्यापिका की नौकरी मिली 8,500 की, मैंने 1 लाख की नौकरी छोड़ दिया और मैंने वकालत का रास्ता चुन लिया। 200 PIL किया मैंने अब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मैं बिल्कुल आनंद जी से सहमत हूं। जो समस्या भारत में है, इसमें से एक भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है।
और जो समस्या भारत में है इसमें एक भी समस्या लाइलाज नहीं है। बाकी तो छोड़ो, जो समस्या भारत में है आनंद जी वो दुबई में नहीं है। दुबई में सड़क के किनारे मजार नहीं बनती, सड़क किनारे दरगाह नहीं बनती। दुबई क्या, मजार दरगाह बनाना तो हराम है इस्लाम में, इसलिए दुबई में, कुवैत में, अबू धाबी में, बहरीन में, कहीं पूरे गल्फ कंट्रीज में एक भी जगह मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान है ही नहीं, वो इस्लाम में हराम माना गया। भारत में बनता चला जा रहा है, उसको वक्फ किया। तो अपनी तरफ से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं क्लोज कर रहा हूं। भारत को बचाने के लिए दो काम करना पड़ेगा। अंग्रेजों के 100% कानून खत्म करने पड़ेंगे। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। और कांग्रेस के कम से कम 50 कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। हुआ क्या, मुगलों ने यहां पे जितने नियम कानून बनाए वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए बनाए। अंग्रेजों ने जितने नियम कानून बनाए वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए किया। और कांग्रेस ने जितने नियम कानून बनाए वो या तो इस्लाम को फैलाने के लिए बढ़ किया या तो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। मतलब मुगलों और अंग्रेजों दोनों को मिशन को कांग्रेस ने बढ़ाया। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, आप उसको अंग्रेजी में बोलिएगा, मेरी तो अंग्रेजी कमजोर है थोड़ी। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और पूरे देश में जितनी सिविल लाइन बनी है उसी अंग्रेजी कानून से बनी है। तो एक्चुअली में उनको सिविल लाइन नहीं बनाना था, उनको कलेक्टर का बंगला या कप्तान का बंगला या डीसीपी ऑफिस नहीं बनाना था, वो एक बहाना था। उनको प्राइम लोकेशन पे जहां जहां ठीक ठाक शहर थे वहां पे उनको चर्च को इस्टेब्लिश करना था, मिशनरी स्कूल खुलवाना था, हॉस्पिटल खुलवाना था। इसलिए पूरे भारत में आपको जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां आपको चर्च जरूर मिलेगा, वहां चर्च अपना मिशनरी स्कूल मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा। और 50% सिविल लाइन की जमीन आज भी क्रिश्चियंस के पास है। ये हो गया, उन्होंने सेट कर लिया। तो बाद में नेहरू जी को क्या लगा, वो तो सेट हो गए, हमारे वाले नहीं सेट हुए, दत्तात्रेय गोत्र वाले। उन्होंने वक्फ एक्ट बना दिया 1954 में, और ऐसी पावर दे दिया। नतीजा ये है कि 1950 में 50,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास थी, आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन है। हमारी पीआईएल चल रही है। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज किया हुआ है जो कांग्रेस ने बनाया था। हमने 1992 को माइनॉरिटी कमीशन एक्ट चैलेंज किया है कि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म हो। 1995 को वक्फ एक्ट चैलेंज किया हुआ है। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था। फ्रीडम मूवमेंट में जनगण मन का कोई योगदान ही नहीं था। इवन 5 जो कांग्रेस का एनुअल मीटिंग होती थी उसमें वंदे मातरम गाया जाता था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया है एक कांग्रेस के अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में। और नेशनल एंथम क्या बन गया, जनगण मन। एक पीएल अपनी उसमें भी चल रही है कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया जाए। अपनी तरफ से जो कोर्ट में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, मैं बहुत एडमायर करती हूँ जो आप काम कर रहे हो जुडिशियल एक्टिविज्म में, लेकिन आपने जो बोला कि दो ही इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बदलाव ला सकते हैं, वो तो संसद है या तो सुप्रीम कोर्ट है। आपने जो इतनी पीआईएल्स फाइल की हुई हैं, व्हाट इज द लॉजिकल कंक्लूजन? उसमें से कितनों का रिजल्ट आपके फेवर में आया है, या तारीख पे तारीख? मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हेन दिस होल सिस्टम इज लोडेड अगेंस्ट यू, एंड आई बिलीव दैट द जुडिशियरी इज कंप्लीटली लोडेड अगेंस्ट यू, विच इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट जो हर दिन रोते रहते हैं कि हमारे जजों को कितना काम है, हमारे जजों को कितना काम है, वो एक ऐसी पीआईएल सुन रहे हैं अभी कि प्राइवेट कंपनीज इजराइल को आर्म्स क्यों बेच रहे हैं। इट इज नन ऑफ द कोर्ट्स बिजनेस। देखिए, अगर आप एफर्ट करती हैं, वैसे मैं बताता नहीं हूं, केंद्र सरकार ने 1,500 कानून खत्म किए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। आर्टिकल 35 एक हमने चैलेंज किया था, खत्म हो गया है। आर्टिकल 370 हमने चैलेंज किया था, खत्म हो गया है। हमने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया था, खत्म हो गया है। यूसीसी पे मेरी पीआईएल चल रही है, मेरे समझ से 1 साल के अंदर यूसीसी आ जाना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल पे मेरी पीआईएल है, शायद कुछ संभावना बन है, कुछ न कुछ हो जाएगा। हमने वक्फ एक्ट चैलेंज किया था, अमेंडमेंट बिल आ चुका है। वैसे मैं इस अमेंडमेंट के पक्ष में नहीं हूं, मैं आपसे सहमत हूं, एबॉलिश होना चाहिए, एबॉलिश होना चाहिए। क्यों? जिस टायर में 44 छेद होना उसमें पंचर नहीं बनवाना चाहिए। वो टायर बदल देना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली जब पंचर वाले आप जानते हैं कौन है। नहीं, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है आनंद जी, मैं आपको बताता हूं।
इस भारत में सबसे ज्यादा जो डोनेट करते हैं मेरे समझ से बिरला जी करते हैं। पूरे देश में मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। अब उनके धर्मशाला पे जहां बन रही है, अगर वहां पे आप गए या मैं गया, मैंने बोला कि आप जो धर्मशाला बनवा रहे हो ना, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे बाप दादा ने यहाँ पे मंदिर बनवाने के लिए सोचा हुआ है, तो हमारा और बिरला जी का मुकदमा चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन वहीं पे आजम खां या ओवैसी जाके बोले आप जहां ये धर्मशाला बनवा रहे हो ये हमारे पूर्वजों ने दान किया हुआ है, वक्फ किया हुआ है, तो उनका मुकदमा वक्फ बोर्ड में जाएगा। हमारा ये कहना है कि मैं तभी तो मैं कह रहा हूं इससे वक्फ बोर्ड को आई थिंक एब्रोगेट करना, अमेंड करने से आसान ज्यादा होगा कि हिंदूज के लिए वक्फ एक्ट का वो ले आए। नहीं, 2-3 तरीका, रातों रात वो मान जाएंगे। नहीं मैं 2-3 इसमें सबसे पहले तो जामा मस्जिद पे क्लेम लगाएंगे, टीआईएल ठोक देंगे। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला हूं। एक तरीका है, या तो इस वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड यूज किए हैं, चैरिटी, एंडाउमेंट और प्रॉपर्टी, तो यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाइए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाइए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाइए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान संपत्ति संहिता। अदरवाइज संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दीजिए। मैंने सेकुलर भी चैलेंज किया हुआ है, अभी 21 अक्टूबर को मैटर लगा हुआ है, सेकुलरिज्म को मैंने कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट मैटर है, जस्टिस संजीव खन्ना साहब की बेंच में चल रहा है। या तो फिर आप सेकुलर शब्द हटा दीजिए, हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल, बौद्ध के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, यहूदी के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, बहाई के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, पारसी के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, सबके लिए अपना अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल बना दीजिए, सब अपना अपना देखते रहेंगे। कम्युनिस्ट के लिए भी जेएनयू तो सबके लिए अपना अपना, भाई तरीका यही है। संविधान का मतलब समान विधान होता है, एक देश एक विधान होता है, और भारत में वैसे भी 18 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, सारे के सारे ट्रिब्यूनल जेंडर न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल है। एक ही ट्रिब्यूनल है जो मजहब के आधार पर चल रहा है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर योजना बनाने, मजहब के आधार पर मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पर कोई स्कीम बनाने, मजहब के आधार पर कोई कमीशन बनाने, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पर कुछ भी करने का विरोध करता है। भारत का संविधान कहता है भैया बंटवारा हो चुका है मजहब के आधार पे, अब कुछ भी मजहब के आधार पे नहीं होगा। The other thing that should be challenged is you should have the right to practice and basically practice your religion. Why preach? Why propagate? टाइम है भैया, थोड़ी देर सुनोगे? और एक जो खास बात मैं आपको बताऊं, व्हाट इज द डिफरेंस। कांग्रेस का आप नेहरू कैबिनेट से लेके मनमोहन कैबिनेट उठाइए तो आपको 10 बड़े दिग्गज वकील मिलेंगे कांग्रेस के कैबिनेट में। जानते हैं क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कानून में शब्दों के उपयोग से क्या फायदा होता है, वर्ड्स क्या यूज करना है, कामा फुल स्टॉप लगाने का क्या फायदा होता है। मतलब कानून तो ऐसा होता है आनंद जी, उसमें आप डैश लगा दीजिए, पैरा चेंज कर दीजिए, प्रोविजो जोड़ दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए, पूरी मीनिंग बदल जाएगी। कांग्रेस ने बड़े चालाकी से 1991 में कानून बनाया जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, नाम क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप को हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल। ध्यान दीजिए, मंदिर पूजा स्थल है, मस्जिद और चर्च प्रार्थना स्थल है, उसको प्लेस है। क्यों? बैठे हैं लेकिन वहां की पूजा नहीं करते, ध्यान कहीं और करते हैं। मंदिर पूजा स्थल है क्योंकि वहीं भोग लगाना है, वहीं ध्यान करना, वहीं फूल चढ़ाना, वहीं जल चढ़ाना, वहीं सब कुछ करना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्लेस ऑफ प्रेयर। अब जो कानून बनता है वो उसके लाभ के लिए बनता है। अगर कानून में लिखा है SC ST एक्ट, यानी SC ST के लाभ के लिए है। कानून में फिर ब्राह्मण एक्ट थोड़ी लिखा जाएगा। आप ब्राह्मण एक्ट बना के SC ST को लाभ नहीं दे सकते, जिसके लाभ के लिए बनेगा वो नाम रहेगा। नाम रखा उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून, और बनाया किस लिए? मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए और प्लेस ऑफ प्रेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1991 में बना, और जब तक हमने PIL नहीं फाइल किया था वो लोग दिमाग में भी नहीं आया कि हो क्या रहा है, कहानी क्या है। तो कांग्रेस ने बड़े चालाकी, जैसे 1992 में उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। हु इज माइनॉरिटी? डोंट नो। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं माइनॉरिटी लिखा है क्या? नहीं। किसी कानून में माइनॉरिटी लिखा है क्या? नहीं। 1% वाला माइनॉरिटी की 2% वाला माइनॉरिटी की 3% वाला माइनॉरिटी, गॉड नोस। UN कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। 1% जो कम होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगी। और यहां जो कम्युनिटी 25% लोकसभा क्षेत्रों में डिसाइड करती है कि लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा,
25% विधानसभा क्षेत्रों में डिसाइड करती है कि विधानसभा कौन जीतेगा। भारत के 25% पार्षद और प्रधान तय करती है कि पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा। उसको माइनॉरिटी कह रहे हैं। हमने माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हमने आज तक, अभी मेरी एक पीआईएल है आनंद जी, जिसमें मैंने कहा है कि धर्म और रिलीजन को डिफाइन करिए। व्हाट इज धर्म, व्हाट इज रिलीजन। धर्म और रिलीजन डिफाइन ही नहीं है। अब उसका नतीजा ये हुआ, सावधान 22 बसेरी, हम सनातन धर्म को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ एट पार उसको तौल रहे हैं। हम भगवत गीता को भी बाइबल और कुरान के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म डिफाइन नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ, हमारी भगवत गीता वेद पुराण भी रिलीजियस बुक हो गई। एक्चुअल में आप देखिए तो भगवत गीता वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल कुरान रिलीजियस बुक है। संविधान का आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस बुक मत पढ़ाना। इसका मतलब बाइबल कुरान मत पढ़ाना। धार्मिक ग्रंथ पढ़ा सकते हो, लेकिन हमने उसके लिए धर्म बार बार कॉन्स्टिट्यूशन मत उठाएं। एक और आदमी है जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन उठाता है, डर लगता है मुझे आजकल कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन उठाता है उससे एक बात मैं पूछता हूं, भारत के संविधान में WAQF कहीं दिखाओ मुझे। भारत के संविधान में वक्फ शब्द उठाओ। आज मैं सुबह यहाँ की सांसद हैं मेधा कुलकर्णी जी, उनके साथ बैठा था। वो जेपीसी में है। वो बोली कि ऐसे वो ये सवाल उठता है, ये सवाल उठता है, ये सवाल उठता है। अब मैं उसको पब्लिकली बता नहीं सकता क्या क्या सवाल उठता है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। मैंने कहा एक बार आप मुझे बुलाओ, मैं उसका ज्ञानवर्धन करूंगा। इतना झूठ बोलता है वो आदमी, बैठ के हर जगह संसद में और हर जगह झूठा बोलता रहता है। लैंड मैटर को वो रिलीजियस मैटर बना रहा है, जमीन के मामले को वो आर्टिकल 25-26 में लेके खड़ा कर देता है। तो एक प्रॉब्लम केवल हो रही है, एक तो संविधान 10 देशों का कॉपी पेस्ट, लेकिन हमने इसको भी अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं किया। संविधान का इंटरप्रिटेशन 4 तरीके से होता है, लिटरल इंटरप्रिटेशन, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। हमने आज तक संविधान का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से किया नहीं। दुर्भाग्य यह हुआ कि भारत में हम जो कहना चाहते थे वो हिंदी में कहना चाहते थे, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है। जैसे गृहिणी, गृहिणी का मतलब, गृह का मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। अब गृहिणी का अंग्रेजी शब्द बताओ, है क्या? ऐसा कोई अंग्रेजी में शब्द है जिससे यह भाव आ जाए कि सब लोग उसके ऋणी हैं? कोई शब्द ही नहीं। योग का कोई शब्द नहीं है, धर्म का कोई शब्द नहीं है, ब्रह्म का कोई शब्द नहीं है, कर्म का कोई शब्द नहीं। अब हम उसको उसके सिनोनियम अंग्रेजी में ढूंढ रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है। और हमने उसको क्लेरिफाई भी नहीं किया। हमने धर्म रिलीजन को क्लेरिफाई नहीं किया, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को क्लेरिफाई नहीं किया। ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के कारण। अश्विनी जी, सॉरी थोड़ा हाँ बस 2 मिनट। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। अमीर हिंदुओं के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। कैसे? सरकार ने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, उस माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में बजट जाता है, उसमें वजीफा मिलता है हजार रुपए। अब झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब, ये कांग्रेस ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री शुरू करी 2006 में पहली बार। अभी तक चल रही है? अभी तक चल रही है। अच्छा। अब हो क्या रहा है, एक झुग्गी में हिंदू, झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन। मुस्लिम और क्रिश्चियन को हजार रुपए मिल रहा है माइनॉरिटी होने के कारण वजीफा। उतना ही गरीब हिंदू है, उसको 1000 नहीं मिलता। वो पूछता है पापा, वो बगल वाले को तो वजीफा मिलता है, उसका पिता जाता है स्कूल, भैया ये उनको दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे? बोले तुम तो हिंदू हो। मतलब हिंदुस्तान में हिंदू होना कितना दुर्भाग्य हो गया, तुम हिंदू हो। अच्छा, ये 1000 रुपए हमारे बेटे को कैसे मिलेगा? एक काम करो, तुम रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दो, तुम्हें नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा, और भी जो काम कई सारे करने पड़ते हैं वो भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम बनेगा तो कई काम करने पड़ेंगे ना, क्या? तो मुस्लिम बनेगा तो कई काम करने पड़ेंगे। बोले अच्छा काम करो, नाम वही रखो, राम कुमार, अनिल कुमार, सब कुछ, केवल रिलीजन वाले कॉलम में तुम क्रिश्चियन लिखवा दो। तो वो लिखवा देता है। अब जब उसको 6 महीने वजीफा आ जाता है तो वही टीचर उसको ब्लैकमेल करता है, यार तू क्रिश्चियन बन के वजीफा ले रहा है, तेरे हाथ में ये रक्षा कैसे? बेचारा रक्षा काटता है। तू क्रिश्चियन बन के वजीफा ले रहा है, तेरे गले में
वो शंकर जी का रुद्राक्ष कैसे, उसको निकाल देगा। तू क्रिश्चियन मन के वजीफा लेता है, होली कैसे मनाता है, दिवाली कैसे मनाता है, वो हटा देगा। तू क्रिश्चियन मन के वजीफा ले रहा है, तेरे गले में क्रॉस नहीं है, क्रॉस डाल लेगा। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। अमीरों के इनकम टैक्स के, जीएसटी के दिए हुए पैसे से, मंदिरों में टैक्स में जो चढ़ावा आ रहा है, उस पैसे से गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। और कन्वर्जन कौन प्रमोट कर रहा है? सरकार। ये दुर्भाग्य है। Thank you. Thank you to all the panel. We'll take just 2 questions, and in between, in parallel, given we are already over short time, we will just get ready for the world record. And for that, I request everybody who is in the auditorium who is not yet dressed up, please get a dress. Please dress up. Okay, it's just a robe. Just get on to it. And meanwhile, we are circulating the speech copy. Okay, please have your speech copy ready. We will have that as the final thing. Meanwhile, we'll just take two questions from the audience. नमस्कार। And speech की copy है ना, यहाँ stage पे भी दे देना please. Yeah. नमस्कार, जय श्री राम, जय परशुराम, जय स्वामी विवेकानंद। हमारा नाम अध्यापक सारंग दानी है और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है एक और पीआईएल के बारे में। जस्ट एक नया थॉट है जो हमारे माता जी ने हमें दिया है। तो एक बड़ा रोल जो स्वामी जी ने किया है देश गढ़ाने के लिए या देश निर्माण में, टीचर्स का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पीआईएल हमारे माँ के नाम से टीचर्स के लिए अगर ये यूनिफॉर्म आता है या एक दिन के लिए यूनिफॉर्म आता है या ऐसा कुछ हो सकता है जहां से टीचर्स चीटिंग नहीं करेंगे और जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मुझे अब मेरी बेटी को इस पर्टिकुलर स्कूल में डालना है जहाँ पे मिशनरी हो या इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो वगैरह, वो छोड़ के, या कोई भी टीचर हो एक दिन के लिए यूनिफॉर्म या प्रोबेबली लाइफ टाइम के लिए यूनिफॉर्म। वैसे सब स्कूल्स या कॉलेजेस टीचर्स ही चलाते हैं, देश भी चलाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा नाम मनोज मालपानी है। ये जो हिंदू अवेकनिंग पिछले कुछ सालों में हुआ है, ऐसा लग रहा है ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हिंदुओं को फिर बांटने की कोशिश हो रही है। यूपीए में पीडीए के नाम पे, महाराष्ट्र में मैडम ने जैसे बोला ओबीसी, मराठा एंड ऑल दोज थिंग्स इज हैपनिंग। आपको क्या लगता है हम जैसे लोगों ने क्या करना चाहिए, या आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं? एक डर हम जैसे हिंदुओं के मन में है कि ये अवेकनिंग कहीं खत्म ना हो जाए। देखिए, किसान क्या करता है? पहले बीज नहीं बोता, पहले वो खेत की जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, उसके बाद बीज बोना शुरू करता है। अल्टीमेटली जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर बांटता कौन है? चुनाव लड़ने वाले। क्यों बांटते हैं? क्योंकि चुनाव जीतना है। चुनाव क्यों जीतना है? सेवा करने के लिए, माल कमाने के लिए। पहले स्कूटर से चल रहे थे, उनका फॉर्च्यूनर उनको खरीदना है। पहले एक पेट्रोल पंप थी, उनको 100 पेट्रोल पंप बनाना है। पहले एक 5 फार्म हाउस था, उनको 25 फार्म हाउस बनाना है। पहले 2 फैक्ट्री थी, उनको 20 बनाना। यही तो पर्पज है। अल्टीमेटली बांटते कौन है? समाज आपस में नहीं बांटता भैया, पॉलिटिशियन बांटते। अब जैसे एक व्यक्ति इस समय भारत से लेके विदेश तक बाहर घूम रहा है, अब पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कर रहा है, नकली गांधी कर रहा है ना। उस व्यक्ति को तिहाड़ में होना चाहिए। उसके पास आय से अधिक संपत्ति है, उसके पास बेनामी संपत्ति है। अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम अच्छा होता, मुकदमों का फैसला फटाफट होता, जैसे खटाखट वादा कर रहे थे, ऐसे फटाफट फैसला होता, वो जेल में होता। आपके महाराष्ट्र में कितने से ऐसे हैं 5-5 हजार करोड़ के मालिक बने हुए हैं, चप्पल पहन के घूम रहे, 10-10 हजार करोड़ के मालिक बने हैं और चप्पल पहन के घूम रहे दिखाने के लिए। तो बांटने वाले का इलाज करना पड़ेगा। पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई। जब तक वो पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, आप बांटने वालों को नहीं रोक सकते। ये मिसयूज हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग झूठ फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे? झूठ बोलना अपराध नहीं है। झूठ बोलना अपराध नहीं, क्यों नहीं है? हमने कानून में लिखा नहीं झूठ बोलना अपराध है। तो ये जो समस्याएं हैं ना, वो केवल इसलिए चल रही जब तक जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं होगा। मैं अपने बहन से बिल्कुल सहमत हूं।
जब तक जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक खरपतवार की सफाई नहीं होगी। जब तक खरपतवार की अश्विनी जी सफाई नहीं थोड़ा होगी ध्यान से, कांग्रेस वालों को इतनी गाली मत दें, कल बीजेपी ज्वाइन कर ले तो। मैडम That is योर a व्यू distinct possibility. महाराष्ट्र में तो 200% possibility. शेफाली मैडम आपको क्या लगता है ये हिंदू अवेकनिंग, शेफाली मैडम आपको क्या लगता है ये क्या? हिंदू अवेकनिंग का जो एक मुहिम जुड़ी है, वो लग रहा है कि थोड़ा सा उसको ब्रेक लगेगा, या इसको कैसे आगे लेके जाना चाहिए? देखिए जेन्युइनली, और ये मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फेलो पैनलिस्ट, मैं हमेशा से ही ये मेरा मानना ये है कि हम हर बार सवाल पूछते रहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, ये पक्ष क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहा है, जज क्या कर रहा है, मेरा नेबर क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रहा है। कभी अपने आप से तो पूछ के देखो कि तुम क्या कर रहे हो। No, it's a genuine question. मैं हमेशा अपने आप को पूछती हूँ, and I do what I can within my capacity to work for a cause that I have chosen. अगर everybody's mind is clear about that, they are also doing whatever they can in their own capacity. If every Hindu starts asking himself or herself, what is it I can do to influence? I cannot change the world, but I can change the minds of 5 people around me. मेरे घर में जो सारे लोग हैं उनको तो मैं इन इश्यूज पे उनको तो मैं जागृत कर सकती हूँ. आई कैन एंश्योर दैट ऑन वोटिंग डे ऑल 5 ऑफ देम गो टू वोट एंड वोट फॉर अ पार्टी दैट इज समवॉट अलाइन्ड टू द हिंदू कॉज. If that is what each one in this auditorium starts doing, I think that is change. And I think that is basically Swami Vivekananda's message, is that everyone should realize what is it that they can do for Mother India, which is why he's saying that for next 50 years, we should start worshipping only Mother India as the only goddess. So to answer your question, I don't think the awakening is going to get a break, but I think that is dependent on us. Governments work when there is pressure. If Hindus create enough pressure about their issues, no matter which government is in power, they have to listen. That is what a democracy is about. एक क्वेश्चन है कि हम करप्शन के बारे में जानते हैं, करप्शन हम सिर्फ सरकारी तंत्र को जानते हैं, बट एज ए कंट्री हम करप्ट हो चुके हैं. सभी जो भी हम साधारण व्यक्ति भी देखते हैं, कोई अपना काम ठीक से नहीं करना चाहता, रोड में नियम नहीं मानना चाहता, सिग्नल क्रॉस करना चाहता है, या तो हर चीज में हम करप्शन, हम खुद भी करप्ट हो चुके हैं. इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसे समाज में परिवर्तन किया जाए ताकि हमारे जनमानस में ये परिवर्तन आए कि हम करप्शन से दूर रहे? उसका जवाब एक शब्द में है, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था सबके लिए. गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा घूसखोरी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा कमीशनखोरी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा जमाखोरी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा मिलावटखोरी नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा हत्या नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा ड्रग स्मगलिंग नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा मर्डर नहीं करता, गुरुकुल का बच्चा बलात्कार नहीं करता. मैं 20 साल से ढूंढ रहा हूँ, कोई मुझे गुरुकुल का बच्चा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मिले कुछ केस के साथ, कोई अपराध करके आया हो, मुझे आज तक नहीं मिला. इसका मतलब सरकार अगर भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना चाहती है तो सबसे पहले हमें अपना वैदिक एजुकेशन सिस्टम से फिर से लाना पड़ेगा. इस मैकाले मिशनरी और मदरसा सिस्टम से छुटकारा लेना होगा. Jai Shivaji. Okay, everybody has the speech copy. Okay, we will audio visual team, we can have the speech on the screen. So we'll just all get up, have the speech in our hands, and I'm really hoping for everybody is dressed up. Please dress up. If you want to move around or something, please, so that we can get good pictures. Thoda center, we can just move quickly towards the center. Yeah, can we have the lights towards the audience a bit?
Ready. There's still few people coming in. Please come in. You all are ready? Okay, camera team, we can have the focus here just on the center. Do we need lights? If you can have the lights, some light there as well, whatever. Okay, all done? Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Okay, so we are about to start the count of 3. 1, 2, 3. Okay. Sisters and brothers of America, it's my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and all nations of the earth. You can turn the page. I'm proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I'm proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I'll quote to you, brethren, a few lines from him, which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is very day repeated by millions of human beings. As the different streams having their sources in different paths, which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time has come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and on of uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Jai Hind. Jai. 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 Mataram. 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 जी जी आप लोगों को वामपंथियों वाला नारा लगाना है, हमें चाहिए आजादी। इसी को रिपीट करना है। मैं कुछ बोलूंगा। गुलामी के नाम से, अरे जोर से बोलो भाई, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की राजनीतिक व्यवस्था से, बोले भारत माता की। Thank you to all super panelists, and thank you to all of you.
I request all the panelists, you can take the seat now. And I want to thank all of you and thank the uh, the team members as well who worked on this. Um, so the preparation for this has been really short on time. In just a matter of few days, we came up with this, and the choice was simple. We don't have much time. Should we do it or should we do it next year? Answer was simple. Let's start. So whatever the start is. So I again thank all of you. Thank the whole team. We'll just take the Shanti Mantra and we will close. Okay. So you can just be seated or sitting, standing, whatever way you want. Uh, yeah, please be comfortable. We'll just 15 more seconds. सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति. Thank you. Okay, while we are still here, there is a campaign, I am Vivekanand, that we are kicking off. In that, what we are doing is you can, we'll be circulating the link of the website. There you can go to the website and just record a voice sample, like 30-second voice sample, and we will generate the speech in your voice. So there we are using AI, and that is all powered by Partex AI. And I request once you get the link, please do try it out, and please start sharing it widely with people. What we want that, yeah, by the next year we should have a few million people who could have already generated, and next year when we take this program again, we already millions of people should have read the speech by then. Thank you. I'll just request the team to come on the stage. Rohit, Rishi, Shubham, Rupali, Utkarsh, Amay, everybody, team, please. Oh, all the team has to come, not just the people who I named. Everybody, please feel free. अभिजीत, अमित, भोसले, हाँ हुकूमत जी, शैलेश, जिसका नाम याद आ रहा है मैं ले ले रहा हूँ, बाकी जो भी हैं ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प किया, रजनीश भैया, कृष्णा, जिन जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प किया, सारे लोग आ जाइए प्लीज. Prakash, शैलेश कहाँ है? शैलेश, Abhijit, आ गए हुकूमत जी कहाँ है? पीछे प्रतिभा, प्रतिभा, यश, आलोक, okay. And we again request the panelists and the speakers to please come on the stage. We'd love to have a picture with you.